We are a precision diagnostic company. So cancer treatment has changed drastically in last couple of years. It's no longer just the site of the cancer. If someone has a brain cancer or a lung cancer or any kind of cancer, now it's very important for patients to understand, if I have a lung cancer, what kind of lung cancer I have, because there are different kind of lung cancers itself. There are different kind of breast cancers itself, right? Prem was mentioning, that different kind of brain cancer also. The molecular changes makes one brain cancer different than the other brain cancer, right? So it's very important now for patients to understand and ask the doctor what kind of cancer I have, not just the site of cancer, but at that site, what kind of lung cancer I have. So we as a company, what we do is we help the doctors to get that answer, to help doctors to stratify the patients based on the molecular information, because cancer is the disease of the DNA. There are changes in the DNA which happens, which causes the cells to grow fast, and that causes cancers, right? So we as a company, essentially, we have developed tests which helps doctor to identify what type of molecular profile is there of the cancer. And once we understand cancer, of course, information is very important, right? Information is very helpful in taking the right decisions. So once we understand the cancer, once we give our report, we also give recommendation that for these cancer, what are the kind of treatment options available. So rather than going for the standard regime of chemotherapy, now there are options where targeted therapies can be taken, which have lesser side effects. But for that, the most important part, again, in a very simplistic way, is to understand the type of cancer that you have. So that's what our company does. That's our primary work, essentially, as a company, 4baseCare. But Oncobody is very close to our heart, because that is something that we are looking at, building a very large cancer community to come together, engage each other, to learn from each other, share each other's experience, right? What we realized is that there is no one place where cancer patients can get the right support and right contacts with other experts and the cancer patients themselves. So that's where Oncobody has come into picture. And the team over here that you see from 4baseCare. So my wife Malika is actually volunteered. She's not as an employee of 4baseCare. She has volunteered. So she sees me what we are doing at home. So she's like, I would like to volunteer to see if we can figure out ways where we can develop good content which would be informative and helpful. And then we have a complete team. We also have patients who have taken the test from us, who have been very forwardcoming in terms of sharing their experience and their journey, so that other patients can learn from them. So Oncobody is essentially more from corporate social responsibility perspective. It's not something that we are doing to generate revenue, because our primary business is diagnostic. Oncobody is from the perspective of building this community of cancer patients where information can be shared, where such events can happen, where we come together. For some time, we don't have to worry about anything else and just be in that one moment, right? Is what I think what we are trying to do with Oncobody. So thank you for this fantastic opportunity. This is a great platform, I think, to towards our vision of building that vibrant and healthy community to support cancer patients. So thanks for organizing this also. Very thankful. And I think since everyone is going to sing, I'm very bad at singing. My wife, I start singing and Malika is like, Hitesh, please. Please stop. Yeah, but you should make her sing. She sings very well. No. But I think I just like to say 4 lines from one of my favorite song, I think, which is very, very relevant in today's time, not just from cancer perspective, but COVID has taught us one thing, that life is very unpredictable, right? And we should live each and every moment of the life, right? So Kal Ho Na Ho ka jo gana hai, basically, Har pal yahan ji bhar jiyo, jo hai sama kal ho na ho. So with that, I would request to take this forward, and that's the introduction to 4baseCare. Thank you so much, Mr. Hitesh. Malika, would you like to introduce your people and? Yeah, sure. I think you guys start introducing yourselves. I mean, okay. I'll request then Jayatri first. Please, one by one. She would go first. Jayatri. Good evening, everyone. My name is Jayatri.
I am currently associated with 4baseCare as a psycho-oncologist since the last 1.5 years. Hi, Okay. Jayatri. Thank you. Thank you. Welcome, Jayatri. And Vinita? Hi, everybody. Good evening to one and all. I'm Vinita Ullas, and I'm a care companion in 4baseCare for past 7 months. Thank you. Vinita, just can you say a few lines about the role which you are playing as a care Yes. companion? Yeah. Yeah, definitely. I'm basically a medical transcriptionist. I'm in my role as a care companion. I encourage my patients and caregivers to make informed decision about their own health. My day never ends without taking or communicating with my dear patients and caregivers. I'm proud of my role and I'm excited to connect with my patients every single day. So Dr. Mongia, just to add to what Yeah, sure. Rita mentioned over here. So we have a care team. So every patient who takes a test from us, right? So we have a specialized care team, which includes care companion, which include counselors, nutritionist counselors, psychological counselors, right? So what we realize is patient does not just need clinical care. They need non-clinical support also. And a single point of contact for any query that they have, right? So that's where the care team comes into picture. So care companion becomes a single point of contact for every patient. And then there are counselors where we provide complementary nutritional and psychological counseling sessions to whichever patient who wants these sessions. So that's the complete objective of a care team, to provide care to the patients, which is mostly non-clinical. So that's what the care team does overall. And care team is, I think, the busiest. Yes. They are the busiest, and they are the ones most bothered by us right now, because for most things we have to reach out to them. And I'm so glad. I think there were 2 more members who were supposed to join from the care team, but maybe they'll join later. I'm very thankful to Vinita for joining. It's really great to have you here, because the work that they do, it's very it's one of the most important things. So I request Neetu now. Hello all, my name is Neetu Sherry-Kurian. I'm content specialist of marketing team of 4baseCare. I've been associated with 4baseCare for the last 1.5 years. It's great to meet all of you. Thank you. Thank you and welcome, Neetu. Just again, quick, Neetu's team is responsible for developing content, which would go on Oncobuddy and some of the social media platform. Again, basically simplifying the content so that it's relatable and easy to understand. And Deepika? Hi, good evening all. This is Deepika, 4baseCare. I am working as a care companion. Okay. Thank you. Thank you, Deepika. Welcome. Thank you, Deepika. And now Meghna has also joined. Meghna, you can introduce Hello yourself. all. I'm Meghna and I've been here from October. I'm the content strategist in the marketing team. So I'm very happy to be part of this event today. Thank We you. are also very happy to have Meghna here today, because she's a wonderful singer. Yes. And Malika, you can also introduce yourself about your. I have no particular introduction. I don't know what to say. So I'm his wife. No. So basically, no, let her introduce. no. So Malika, so Malika is very creative, and one of the things that we wanted from Oncobuddy perspective, especially Instagram, and she has a very active Instagram handle also. So that is where I used to always go and eat her head that our Instagram, we don't know how to take this forward. We need your help, but we are not hiring you. You have to do this free of cost. So she's working with the team. She's volunteered to help us, and she's working with the team in terms of complete Oncobuddy Instagram strategy to start off with. So, and she herself, she does not talk about it. She has double masters. She has done a master's in HR from UK. She has a master's in economics. And currently she's helping us with all the Instagram strategy, coming up with new way of representing the content. So 6 years. So we had our daughter, and then I left work because I wanted to concentrate on just her.
and then COVID, etc. happened. And then, so she was being homeschooled for the better, part of it. So it's been a hectic last 6 years. So this year, she started going to school and things again became normal. And I was like, I have to do something. And suddenly, like, he told me that, why don't you pick this up? We're not going to pay you, no money. So I was like, it's okay. I'm fine. But I think that this is a great opportunity. Like, this is such a great area, because in India, there's not much communication that happens from cancer patients. So there's a lot of information that is there everywhere, but not much communication happens from cancer patients. I mean, right now, I think a few people like Jayanti ma'am. Is she joining us today at some point? They'll be joining at 6:30, both of them. Okay, And yeah, I'm yes. looking forward to meeting her so much, because I mean, her online presence is like one of the very rare presences that I have seen. I mean, she is so funny, she is very vivacious, and she's extremely cool. So I think we need that kind of outspokenness from cancer patients, where they are talking about everything by themselves. It's not just the information that is being put out into dead air. They also need to start communicating amongst each other. There should be a thriving community where they have that option to talk to each other. And I think this is there. I've seen this everywhere. Like in foreign countries, this is a very common thing. People are very outspoken. They communicate a lot about their problems. Sometimes they don't talk to the doctor. Sometimes you just want to talk to someone who's going through what you are going through. So I think it would be a good idea to have an online community like that. We have the cancer fighters for whom we are organizing this event. So yes. I think we have a huge round of applause for all of them, first of all. Mr. Ramesh is there, and Suchi Smita is there, Akansha is there, and Prem Sudhakar. Prem, we have already heard. So yes. Ramesh ji is joining us from Bangalore, and Suchi Smita is joining from Kolkata, and Akansha is joining from Jhansi. Jhansi, I remember because I have served in Jhansi for 3 years. So that is my old station. So they are all very talented. And I know, so whenever they are going to perform, like in the sequence, I request them, they introduce themselves, they talk about their journey, and they can perform as well. So I think we should start the event. It's already 6:24. So yes. We can start the event and then we can interact with all of them. Yes. So today we are going to start with Usha Krishnan ma'am. She is going to present a Kannada song for us. So let's give her a huge round of applause. Usha ji. Just one thing, whenever somebody is performing, we'll mute ourselves. And when she is finished, we'll unmute ourselves to appreciate. So all the best, Usha ma'am. Thank you. Thank you, Rajesh. ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಹೂವಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಮೊಗವನ್ನು ಕಂಡೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ
ಹುನ್ನಗೆಯ ಕಂಡೆ ನಗುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚೆಲುವನ್ನು ಕಂಡೆ ಚೆಲುವನ್ನು ನಿನ್ನ ಒಲವನ್ನು ಕಂಡೆ ಒಲವಂದ ಬಾಳ ಹೊಸ ದಾರಿ ತಂದೆ ಮುಗಿಲಲ್ಲು ನೀನೇ ಮನದಲ್ಲು ನೀನೇ ಮುಗಿಲಲ್ಲು ನೀನೇ ಮನದಲ್ಲು ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಎದೆರೆದರೇನು ಭೂಕಂಪವಾಗಿ ನೆಲಬಿರುದರೇನು ಕಡಲೆಲ್ಲ ಹೊಮ್ಮಿ ಬಳಿ ಬಂದರೇನು ಮಳೆಯೆಂದ ಬೆಂಕಿ ದರಗಿಳಿದರೇನು ಜೊತೆಯರಲು ನೀನು ಭಯಪಡರು ನಾನು ರವಿಯಲ್ಲು ನೀನು ಶಶಿಯಲ್ಲು ನೀನು ರವಿಯಲ್ಲು ನೀನು ಶಶಿಯಲ್ಲು ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ la 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 la. Long time you have sung this regional language song. Malika, actually, she has been singing Hindi songs. I think more than 80% of times she must have sung Hindi songs only. Okay. Sometimes she sings Tamil, Malayalam, Kannada, but after a very long time she has sung. Mr. Ramesh, right? Yeah, this was specifically for Mr. Ramesh. Yes, yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, madam. It was So wonderful. if I may ask, ma'am, what does the song mean? The song tells that you are everywhere. You are on the sky, you are on the earth, and you are everywhere. And why should I be scared of this bhukampa, that means earthquake, or the hurricane, or if the ground is getting splitted over? I'm not going to bother about that, because you are there with me always. Okay, beautiful. Malika, let me tell you, Usha ji's husband, he is also a doctor. Her daughter is an architect. And all the songs selection of whatever she is going to sing is done by Dr. Rajiv. Okay. We have a lot of doctors amongst us. Yes, yes, yes. I can spot a familiar face. I've forgotten her name, but she frequents your programs a lot. Yeah, Parna is here. Welcome, Parna. Yes. How are you? Hi. I'm good. Thank you so much. Very familiar face. I keep seeing her. Yeah, she's Jayanti's sister, no? Right. Oh, okay. Yeah. Right. So welcome, Parna. You have just missed Usha Krishnan's song, amazing song, which she sang, a Kannada song. Oh, that's so nice. Yes. I will catch up as always. My videos हमेशा देख लेती हूँ. So I think this was specifically for Ramesh ji. I'll ask Ramesh ji about this song by Usha ji. Yes. Thanks a lot. It was wonderful, man. Beautifully sung and highly
with all the emotions and the expressions that you were showing while singing. It was really classic. Thank you. Beautiful. And thanks for singing it for me. Namaste. Thank you, Ramesh. Okay, I'll sorry. Just I have to go. I have to take another call. No problem. No Wonderful problem, to meet you all, and make Malika also sing a song. Definitely. She promised last time she is going to sing with her daughter. So both of them are going to sing together. I had planned to let her come. She's nowadays she's Right. Thank you. she Nice has Bye, very sir. good- Thank you so much. Pleasure meeting you. Bye. So Malika, now you can change your name instead of Hitesh. Kindly do Malika. No, Rename yourself. Can we do that? Yes. Yeah. In fact, I can also do that. Chali. So I think thank you so much, Usha ma'am. Let's give a huge round of applause to Usha ji. So now we can proceed further. A Kannada song ke baad, I think we should have a Kannada song only. Ramesh ji. Yeah, sure. How about you singing a Kannada song? Yeah, So I will do that. yeah, please. No, I'll yeah, please go ahead, sir. This is a devotional song, in fact, requesting the Lord to have darshan for me. Okay? Yeah. And it is from the movie Bhakta Kanakadasa, sung by the legendary singer P.B. Srinivas. Okay, yeah. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಪರಮ ಪದದೊಳಗೆ ವಿಷಧರನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀ ಸಿರಿ ಸಹಿತ ಕ್ಷೀರವಾರುದಿಯಳಿರಲು ಕವಿರಾಜ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆಲಾಕ್ಷಣ ಬಂದು ಒದಗಿದೆಯೋ ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಕಡುಕೋಪದಲ್ಲಿ ಖಳನು ಖಡುಗವನೆ ಹಿಡಿದು ನನ್ನೊಡೆಯ ಎಲ್ಲಿಹನು ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ದೃಢ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ಭಜಿಸೆ ಸಡಗರದಿ ಸ್ತಂಭದಿಂದೊಡೆಯೋ ನರಹರಿಯ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಯಮಸುತನ ರಾಣಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವತನವಾಯಿತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜಮಿಲನ ಪೊರೆದೆ ಸಮಯ ಉಂಟೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನಿನಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾದಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೆ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು. Thank you, sir. Thank you. And without the background, it's difficult to sing, of course. You sang really well. Karaoke, I am unable to provide. No problem, sir. It was too good. Thank you. So now we can hear something about your journey, Ramesh ji. Please. Just a second. Jayanti is also here. Let me introduce all of you to Jayanti. Hi, Jayanti. Sure. How are you? Hi, sir. Good evening, everyone. Hi. Good evening. Namaste. We were all waiting for you. Jayanti, if possible, can you make it landscape? Otherwise, no issue. Hanji. Sorry, Pandana told me. No issues. So, Ramesh ji is also a cancer fighter and he's joining us from Bangalore. So, we just heard his song. Now we are going to listen about his journey. Maybe, please, sir. I'm basically a mechanical engineer, passed out in the year 1972 from Government Engineering College, Anantapur.
And then I started a business in the sense that I was having a gas station for about 25 years. I had to close down mainly because the lease of the land got over. Then I joined a construction company as project manager, served that for about 7 years. And that gave me a lot of problems physically. That is, I started knee problem, some health issues, a lot of health issues were there. I've undergone even bypass and then stenting of another artery and 4 more surgeries after that. And finally, see, my children, they are in Australia. I have a daughter and a son. Daughter, she has done a PhD in biotechnology from Melbourne University. She's working as a scientist there. And my son-in-law is a cardiologist at Australia Government Hospital. My son is an engineer and an MBA from Europe. He's working for an American company stationed in Melbourne. So we keep going to Australia and they also keep coming. So this time we went to Australia to stay for a period of 1 year. We went there in November. And then on January 28th, which happens to be my daughter's wedding anniversary day, in fact, I developed a lot of discomfort, breathing problem, chest pain and all in the morning. I was staying with my son in Melbourne, whereas my daughter is in a place called as Ballarat, about 125 kilometers away from Melbourne. Then I consulted my son-in-law. He said, straight away go to emergency ward at the nearest hospital. My son drove me to the hospital, which is about 10 kilometers away. There, I was detected as having a heart attack. I was immediately admitted. And it's a small hospital compared to the other one. They said, we don't have cardiology department here. So please shift over to St. Vincent's Hospital in the heart of the city. We'll arrange for the transport with the ambulance and all. I was taken to that hospital. And then immediately I was in the ICU. And I had a lot of gas problems for a fairly long time. It did not develop recently and all this. I told the doctor this gas problem is there. So they did endoscopy and detected cancer of the stomach, which the sample also they sent for biopsy and it was confirmed as malignant. And they almost indicated this is on the 4th stage, stage 4. In fact, the best experience I had of hospital is in Australia. Believe me, the on-course surgeon, I used to lie on the bed and it was at a fairly elevated this thing. And doctor, a surgeon, on-course surgeon, he comes. The Australian English accent is not easy to understand for us. So I requested him, please talk slowly. So he sat on the floor next to the bed. Mind you, on-course surgeon in Australia, Dr. Mehfil, he sat and explained in detail about the cancer that I'm having. And he said, the best thing is to have operation first and remove. But because of my heart problem, I have a lot of heart issues. And I am allergic to general anesthesia, which affects my heart straight. So they said, because I was passing the blood in my stools, they said, first we'll have to control the blood stoppage. So you undergo radiotherapy treatment for a week. So I went to Ballarat, where my daughter and son-in-law are there. So my son-in-law got in touch with the oncology department at the Ballarat Hospital, where he is also a cardiologist. And immediately I could meet one Dr. Tanuja, oncology doctor. She was so nice and this thing. Immediately from next day, said she will start the therapy, radiotherapy. So 5 days I undertook radiotherapy in Australia. Then she suggested the same thing. First thing is you'll have to undergo chemotherapy treatment, and then you'll have to think of surgery. So surgery is a secondary option because of your heart issue that the cardiologist will decide. And she said you can have the chemo treatment either in Australia or go back to India. So I said I'll go back to India because all my relatives are there. In Australia, only my son and daughter and son-in-law are there. And they are at different locations. So I said I'll get back to India. So on April 5th, we came here.
And on the 6th, I had taken an appointment with Dr. Anil Kamath at Apollo Bangalore Hospital from Australia. So because my Samandi, she's also a doctor, and Dr. Anil happens to be her student. So she fixed up the appointment for me. The very next day, I met Dr. Anil Kamath. He said, I am the surgeon, but onco specialist is Dr. Vishwanath, right opposite to his cabin. And then he introduced me to Dr. Vishwanath. Dr. Vishwanath took all the details. I showed him the records of the Australian hospital, everything. Then he said, we'll give you chemotherapy treatment first. And then we have to think of the operation also, which can't be ruled out, but let us see. So he started the treatment right from the very next week, because I said I want to have 3-4 days of gap, mainly because of the jet lag experience, So he said every Friday we will start the treatment. It will be a 9-cycle treatment on every Friday. We'll see how it goes. So they gave me the treatment. The 3rd cycle, I had a lot of diarrhea problem. And then when I went for the 4th cycle thing, I was totally exhausted. I told the doctor, I am totally weak because of the diarrhea problem. I don't know whether I can take the chemo today. So he said, not to worry, we'll postpone it to Wednesday, next Wednesday. So it was postponed to next Wednesday. And it was okay. But the side effects of chemo is there. Wow. All of you know what it is. The first time the experience I had was skin peeling of my palm, skin peeling inside the mouth. And I couldn't even eat food properly. And fatigueness was there. And alternate cycle of the constipation and diarrhea. It still continues even now after every cycle. So it makes me quite sad, but I take it as it comes. God luckily has given me the gift as to face as things come. Because I have undergone 6 major surgeries in my life. I tell my friends and relatives I've been cut like a vegetable. And I still bear it. And luckily God has given me this thing, to keep smiling about it and enjoy it. Yes, I take it as it comes. This is what I'm undergoing. And the last cycle will be on the next Friday. 8th cycle I had was only yesterday. Yesterday night, I was terribly weak and I couldn't sleep, in fact. Totally fatigued. My wife is taking, my son was here for about 47 days. In fact, he went only on the 31st. So that is because he's relocating to London on work next month. So he has to make all arrangements from Australia to move and all that, and renting out his house, which is there. So he has to go. So he's gone there. Now only myself and my wife we are here. That's the simple story. Ramesh ji, I mean, hats off to you for all the courage. And still, you are smiling. You sang this beautiful song for us. Thank you so I think much, let's give a huge round of applause to Ramesh ji. Thank you, thank you, thank you. I think Jayanti has come. So she is an amazing, she is also a cancer, fighter, a cancer warrior. And she is an amazing motivational speaker. So I think before, Suchismita, if you allow me, before you, can I request Jayanti to say? Because yes, sir, no issues. Is it okay now? Okay. So I'll request Jayanti to please. Thank you, sir. Thank you, sir. So last time I'd spoken about my journey, so I didn't want to go through that. But I did want to share that one moment. जब जैसे वो कहते हैं ना हिंदी में बत्ती जलती है लगती, तो वो बत्ती जलने का मोमेंट है. So this was October of 2021. एक रात को कुछ काफी चीजों के बाद suddenly जैसे सर के ऊपर पानी चला जाता है, मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ था. तो मैंने और मेरी बहन पढ़ना जो सर के पैशन वाले टीम है, हमने बैग बोरिया सब पैक किया, एक कार बुक की और हम रात के 1 बजे निकल गए मैक्लोडगंज के लिए.
मकलियोडगंज मेन छोड़ के एक थोड़ा सा दूर जाके गए थे दलाई लामा टेम्पल। एक छोटा सा टिबेटियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का एक छोटा सा रेस्ट हाउस है। हम हमेशा वहां पे रुकते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम वो हमारा होम ऑफ द हार्ट, हमारा दिल वहीं पे रहता है, हम सिर्फ बॉडी यहाँ पे ले आते हैं दिल्ली में। तो हम करीब 12 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करके वहाँ पहुंचे और वहां पे जाके मुझे लगा कि जैसे थोड़ी सी हीलिंग प्रोसेस होती है। This was after 3 months after my surgery, and I was still under chemotherapy. I'd taken about 2 sessions of chemotherapy. So I had spoken about this the last time as well, but क्या होता है ना, and Ramesh sir may have had a different view, but what happens is mostly for us cancer patients, कैंसर एक बीमारी नहीं होती, वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है आपकी लाइफ की जो आपकी पूरे लाइफ को टेक ओवर कर देती है। कोई कोई पार्ट ऑफ योर लाइफ नहीं छोड़ती, स्पेशली इफ यू जस्ट आपने लाइफ शुरू की है एंड यू जस्ट फिगरिंग आउट क्या होगा आपकी लाइफ में। तो मेरे साथ भी कुछ उस वक्त वैसा ही हो रहा था। मैंने इसके बारे में पहली बार की, मेरा करियर उसमें बहुत फास्ट प्रैक्टिस चल रहा था और वो एकदम सभी खत्म हो गया। मुझे मेरे बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता था, वो भी खत्म हो गया। और जो वो कहते हैं ना, द लास्ट स्ट्रॉ विद व्हिच ब्रेक्स द कैमल्स बैक, मेरे साथ उस रात को वो हुआ। सो एसेंशियली पहले तो सब हाँ हाँ विल बी देयर टू सपोर्ट यू, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड देन स्लोली सब मूव आउट कर जाते हैं। सारे नहीं बट 90% मूव कर जाते हैं आपकी लाइफ से। तो हम लोग बंगाली में एक दुर्गा पूजा के बाद एक गैदरिंग करते हैं, विच इज कॉल्ड द विजया गैदरिंग। एंड मेरी बहन और मैं ट्रेडिशनली वो हमेशा होस्ट करते हैं। और उस साल भी डिस्पाइट द सर्जरी, डिस्पाइट द कीमोथेरेपी, मेरा पूरा फुल ऑन प्लान था वो होस्ट करने का। और मैंने 2 महीने पहले अपने फ्रेंड्स वगैरह सोशल सर्कल से चेक करके डेट वगैरह फिक्स किया था, जब सबने कहा था हाँ हाँ हम आएंगे। और जब एक्चुअली एक ही हफ्ते पहले था मैंने सबको रिमाइंडर दिया, तो सबने आउटराइटली मना कर दिया। किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, एंड दिस वाज इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ सच रिजेक्शंस। जब लोग मुझसे मिलना नहीं आ रहे थे, मुझे फोन पे कॉल नहीं करते, कुछ नहीं करते थे, एंड दिस इज अ होल लॉट ऑफ रिजेक्शंस व्हिच वर कमिंग। और मेरी ये काफी बड़ी बात थी, बिकॉज I am somebody who invests a lot in my groups, or because I grew up away from my traditional larger family. For me, these friends were my family. I thought of them as somebody who were part of my circle. So when they started behaving like this, from that July time frame onwards, जब मेरा diagnosis हुआ, to October when things started going really weird, this was like too much for me. और मुझे कहीं जाना था, थोड़ा सा अकेले में रहना था, obviously बुक पढ़ना, everything is अकेला as I have one. And I just needed to figure out my life. So once I reached McLeodganj, मुझे थोड़ा सा वो जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा लगा कि थोड़ा कंट्रोल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आई कैन सी रैशनैलिटी कमिंग बैक टू मी, बट अभी भी काफी कुछ होना बाकी है। तो आई वाज स्टिल वर्किंग, बिकॉज आई वर्क वर्चुअली, मैं वहां पे जाके भी काम करती थी। और 2 दिन बाद मैंने जब लॉग इन किया, तो मुझे पता चला कि मेरे लीडर ने, जिसको मैं लीडर नहीं समझती थी, जिसको मैं अगेन बहुत क्लोज थी मैं उनकी, आई लिटरली हम लोग ऐसे बात करते थे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो आउटसाइड द वर्क है, वी आर मोर लाइक सोल सिस्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे पता चला कि एक पोजीशन आई थी जिसके लिए मैं एकदम रेडी थी, और मतलब मुझे पहले बताया गया था कि मेरे लिए वो पोजीशन है, और फिर वो पोजीशन किसी और को दे दिया गया और मुझे बताया नहीं।
for somebody who is very invested in work और जिसका career path बहुत अच्छा था, that along with the illness, along with the friends, all of that was creating a really bad place. मुझे लग रहा था कि जैसे मैं गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ और इस मतलब डाउनवर्ड स्पाइरल का कोई एंड नहीं है। जो कुछ चीजें भी मेरी इम्पोर्टेंट थी, करियर, मेरा फ्रेंड्स, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सारा एकदम हेडलॉन्ग गिर रहा है। जैसे किसी 108 मंजिल से कोई कोई चीज गिर गई और कुछ रुक नहीं रहा था, कोई मुझे एंकर नहीं दिख रहा था और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि कुछ सेंस ऑफ सेंस बने जो इंटरनली जो मेरा रेज है, आई बीन डायग्नोज्ड एट अ वेरी यंग एज, वो ऑल ऑफ दैट कि वो कुछ रोक, लेकिन वो मिल नहीं रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग एक प्लान करके एक ड्राइव के लिए गए एंड काफी दूर तक हमें वो ड्राइवर लेके गया एंड आफ्टर दैट वो रास्ता खत्म हो जाता है उन्हीं माउंटेन्स में और फिर आपको चलना पड़ता है। So this is like I said, this is just 3 months after the surgery. तो मुझे और प्रणव को we weren't sure कि हम लोग मैं कितना चल पाऊंगी, अटॉल चल पाऊंगी, but मुझे कुछ करना था। I was like अभी चलते हैं फिर देखेंगे जितनी भी दूर बात। इनिशियली तो मुझे काफी इरिटेशन भी हो रही थी, वो पूरा बैकलॉग था, लाइक था जो हुआ कल उसका वो था। फिर रास्ते में काफी हॉकर्स थे, काफी सेल्फी सीकर्स थे, चीख चीख के लोग बात कर रहे थे। सो वो जो हाइकिंग का जो जॉय है वो मिल ही नहीं रहा, मतलब इट वाज जस्ट वेरी कमर्शियल एंड वेरी क्राउड। बट फिर भी हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए और एट सम पॉइंट वो सारे फोटो खिंचाने वाले लोग चले गए, चीखने चिल्लाने वाले लोग चले गए, जो रोड साइड हॉस्टल्स होते हैं वो भी कहीं छूट गए पीछे एंड सडनली इट वाज वेरी क्वाइट। The only thing that the sound that we had was the sound of our falling feet on the ground and the rustling of the leaves, जैसे कहते हैं, वो जो पहाड़ों में ही मिलती है, सच में हिमालयन पहाड़ों में, मतलब ऊंचे ऊंचे कॉनिफर्स, हवा में जो हवा के झोंके से जो नॉइज करते हैं, जो ट्री साउंड्स होते हैं, वो हो रही है। ट्रैक थोड़ा सा स्टीप भी होता गया और ग्राउंड काफी ब्रोकन भी होता गया, पर हम चलते रहे, बहुत शांति थी। धौलाधार रेंज जो है, it's one of the most beautiful ranges of Himalaya. And we could see those great gray slabs of stone, mountains merging into lovely green, verdure, and then becoming even more green, like almost black, almost kala. And on the top of those mountain point peaks, अभी भी last year के residual snow था, and the sun was at its height, and it was bouncing off those snow ice tips like glorious diamonds, and it was a it was that point of realization that there are powers at play which you don't control, which you don't understand, and there's something greater. And we kept hiking, and finally we reached the summit, the peak, the end of that small mountain, and that was the time when I started coming back together. Standing there on that piece of that mountain and watching that entire landscape, you were in the presence of something way bigger than आपके ऑफिस में क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. And at that point, there is this beautiful poem by Mary Oliver
which एक समय मुझे एकदम पूरा याद होता था, but नो ब्रेन तो अब याद नहीं है, तो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी. वो मेरे दिमाग में बहुत घूम रही थी, because that was the exact moment जब मुझे पता चला कि this is what this poem meant, and this is what, you know, poets like her were trying to teach lesser mortals like me. Every day I see or hear something that more or less fills me with delight, that leaves me like a needle in the haystack of life. It, it was what I was born for, to look, to listen, to lose myself inside this soft world, to instruct myself over and over in joy and affirmation. Nor am I talking about the exceptional, the fearful, the dreadful, the very extravagant, but the ordinary, the common, the very drab. The daily presentations. Oh, good scholar, I say to myself, how can you help but grow wise with such teachings as these? The untrimmable lights of the world, the oceans shine, the prayers that are made out of the glass. It is that feeling of knowing that that joy is in this moment, here and now, and the agency is always with you. It is not with anyone else, or nobody can give it to you. वो मुझे नहीं मिलने वाला, बिकॉज किसी ने बोला है मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो मुझे प्रमोशन मिल भी जाता है तो उससे मुझे वैलिडेशन, मेरी वैल्यू नहीं होती है. लोग आएंगे जाएंगे, but that in itself doesn't make for my value. What makes for my value, what makes for my peace, what makes for everything is the agency inside me. It is what we have inside us, which gives us that feeling of, you know, of having a right, of being in control, of being in peace, and of being joyful. I know, of being joyful. So हम ट्रैक से वापस आ गए और फिर हमने बहुत बड़ा एक छोटे से रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा म्यूजिक खाया. फिर हम मैक्डॉनल्ड्स के उस रेस्टोरेंट में वापस गए. And I learned that everything is inside of me. It was not for anyone else to. I'm sorry. Spam calls apparently have been phone. It was not where I was seeking in the outer world. I needed to look at that. I needed to look at this lesson. Now we can. Yeah, it was that spam call. Sorry. So basically we needed to understand. I needed to understand that सब कुछ मेरे अंदर ही है, बाहर ये सब छोड़ कर. I would come back and I would continue to work. I would make new friends. I would lose more promotions, but I would also get to work on great projects and have great colleagues. I would discover a calling in doing what I do now as part of the Candid Cancer Conversation, where I try to educate and provide support and provide immunity to cancer patients. And most importantly, I learned that we all have inside us the power to control ourselves. And we don't need anything external to enable that. I would not be diagnosed with metastatic cancer after this as well. And I would be told कि मैं incurable हूँ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती. But because of what happened that day in October back in 2021, I had a lot more strength to face this new chapter in my life with this incurable
tank. So that's pretty much all I have to say. So वो सर कहते हैं ना motivational speaker. So मुझे बताना कि वो बत्ती कब जली मुझे motivational speaker या कुछ करने की. That's all I have to say. She's always inspiring. Last time also she inspired all of us. Today also again she has inspired us. Thank you, Jayanti. I'll ask Charu. Hi, Gigi. Hey, Charu. कैसे हो आप? I am good. How are you? I am good too. As good as it gets. And the thing is that, like you were talking about this, that it's like you don't need any validations from outside. But to come at that stage, it takes a lot of struggle. I do understand. But that like I heard this very beautiful line which said that, सबर करने से सबर आ जाने तक का सफर बहुत मुश्किल होता है. बहुत सही बात है. But that is like so true that you explained that, at last, like nothing matters. It depends, like you know who you are. But the thing is that when we are kids, we know who we are. But जैसे हम grow होते जाते हैं, labels लगते जाते हैं, we start defining ourselves from those labels. And if we try to free ourselves from those labels, we hold the potential, like you said, to do something really good and identify ourselves. That is so good. And I also think that we might say that, कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ या फिर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया. But we never realize that whatever is happening in our environment is happening to actually push us to fulfill our cause in this lifetime. I truly believe that. Thank you so much for sharing this. Thank you. Thank you for listening to me. Thank you. We all love listening to you. Thank you. Malika? I think I most appreciate, so I just happened on her profile while I was looking for, content, and I was just checking all the influencers and different kinds of content that is available and the cancer communities that are there. Not much, to be very honest. Even Indian Cancer Society, it's pretty, it's deserted. No one talks, really. And then I happened on her profile and I was like, who is this angel? So she is so full of life and her content is so funny. The best thing that I like about her is, her ability to come up with memes and all. And that is what I am also trying to do. And, that's what we are trying to do, to make it as relatable as possible. So that, you take out the fear and you take away the sadness. Normalize the conversation. Just normalize it and just, get this message through that you are alive in this moment, enjoy it, and, be thankful for each and everything that you have. And I don't think that anyone else other than Jayanti ma'am, of course, all of us are here, but I think she's truly made an example of, how to build a community. Her 10,000 plus community on Instagram, it's just fascinating. It's amazing, truly. It's an inspiration for us because that's what we are trying to do as well. We've got a very small team right now. And as you can see, Sutishmita, you'll meet Sutishmita and Akanksha, and we've already met Mr. Ramesh and Prem. But Sutishmita and Akanksha, they're very young. They're very, very young girls again. And I was also very shocked when I came across their profiles. I was like, they're so young, and they're all, again, so positive, very, very positive, always eager to contribute. And I'm so thankful for you joining us and all of us together. It's a beautiful feeling, to be very honest. Thank you so much. Thank you so much for the kind words. And yeah, I love memes. And हर चीज का humorous side तो होना चाहिए ना. Correct. Ekdam. So those are my Friday funnies. Because sometimes I think of a content now and then I think, pata nahi, kisi ko bura lag gaya to someone may think that, oh, is she trying to make fun of it? But it's actually, you have to be very there's a fine balance. Balanced hona padega, and I just love your content. Thank you so much. That made my day. Thank you. So thank you so much, Jayanti. Thank you for joining and inspiring us.
So now we'll move forward. Actually, Suchi Smita wanted to leave early, so she had requested me. So I'll request Suchi now. So Suchi is joining us from Kolkata. Welcome, Nivedita. Nivedita is just back from Kolkata. She's By the way, all fellow Bengalis here. Bengalis raise hands. Yes. Majority is of Bengalis today. So Suchi is going to sing a song for us, and she is going to tell something about her journey also. So please welcome Suchi Smita with a huge round of applause. Okay, so good evening, everybody. Thank you for giving me the opportunity to speak here, first of all. Secondly, sir, as you said that though I am a Bengali, we stay here at Nagpur, Maharashtra, and it's like okay, first of all, let me just present my song and then I would just give my journey briefly, because we all know that sharing the journey is very emotional. So, first of all, I would give the song to the best possible, but Usha Krishnan ma'am was very good, really. So, I won't match her, of course, but I would try my best. Okay. So first of all, as you like as ma'am said, how many Bengalis are there? So yeah, I would start off with a Bengali song, one paragraph, and then I would move to a Hindi song. Yes, sir. On. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So let me just start off with my song, and I would request all the Bengalis to please sing because we all know this song. I'm so sure. But they will be muted, Suchi. They will be muted. They can't sing because there will be a conflict. Nobody would be heard then. Okay. পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি বলা যায় পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি বলা যায় আয় আর একটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখে দুঃখে কথা কব প্রাণ জোড়াবে তাই মোরা দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় Thank you. So this was my Bengali song. As you understood that we had somebody singing from my background, so that was my father, because I was not really confident and very nervous in to sing in front of all of you. So yeah, now I would like start off with my Hindi song. Just tell me, sir, if you can hear my karaoke, if it's like okay for you, and if it is not, sir, then I will sing it normally. But you didn't try during the dry run, so Okay, no so problem. I would suggest don't do that. No. No problem, sir. I would normally sing it. आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने पे भी आजा गी बहार झूमने लगेगा आसमां झूमने लगेगा आसमां कहता है दिल और मचलता है दिल मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार लगता नहीं है दिल यहाँ लगता नहीं है दिल यहाँ भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर जिंदगी है एक सफर का
कौन जाने कल किधर आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने पे भी आ जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमां झूमने लगेगा आसमां थैंक यू Thank you, sir. Thank you. Very beautiful, Suchishmita. Thank you. Thank you, sir. And as And you could understand, I was nervous enough. I even forgot my last line. and thanks to your father as well, who was Oh, who was yes. encouraging you. Yeah. I have a word to say. Please. Language is no barrier in this, especially for music. Though I haven't understood a single word of the Bengali song, it was so lovely to hear. So pleasing, melodious, and beautifully sung. Thank you so much, sir. Thank you. Sir. It was a Rabindranath Tagore song, sir. Okay. So please go ahead, Suchi. Yeah, yes, sir. So, like, I would like to share my journey very briefly. So, as ma'am said, like, Akansha and me, we are like two young girls, and in the field of cancer, when we talk about, we do not like generally talk about young people, right? Like, it's always about even when I took the treatment, like, I'm still the youngest participant over there. So, even after 3 years of completing my treatment, so I'm still the youngest participant over there. So yeah, and if I talk about what I was diagnosed with, so it is a big name. I don't even cannot pronounce it. It's rhabdomyosarcoma, something like that. It's a type of sarcoma which happened to be in the left lung, yeah. And I took chemotherapy and radiation therapy, so 16 chemo cycles and 28 radiations from a reputed hospital in Mumbai. So actually, after my treatment, where I was facing really loss of identity, or like somebody of my age could not relate to my condition, I found someone who is not in 4baseCare right now, but like I came in touch with 4baseCare through them actually, through her actually. So like I found their motive, their aim to be so noble, like to go in touch with people like us, where in India, like nobody talks around. Even your like neighborhood auntie, she has the same cancer, no, she will not talk about it. So it's very close. So I just wanted that if I could share my journey or the small to small point, sir, like for example, you can drink water or you can go to like some problem, some dehydration problem. That very little information, there is no doctor needed for that. But still there's no one to give. So it's just that I wanted to volunteer myself so that I could be of some help to some patients. Yeah, that was all for my journey, and I ended my treatment in 2020. So yeah, that was all from my side. And yes, I am 25 years. I am an engineer. I have done my engineering in 2021, passed out, graduate. So I'm working currently, and I'm working with Mallika ma'am. She's a beautiful soul actually. Like so much help whenever it's like in the morning, it's in the night. So much help. And I would like, as Jayanti ma'am also, like I have heard her for the first time today. So it was like she was so open. We need that openness. Whatever we speak, maybe it doesn't make a sense. People will be laughing at us, but still there will be some people, who will need that information. So thank you, Jayanti ma'am. It was so good. Thank you, Usha ma'am. Your singing was superb. And thank you, Ramesh sir. Also, like my father was saying that he is. There are not many people, who know that they are not good at singing, but still they come up. It needs a lot of energy and a lot of courage to do that, which you have done. You have been such a motivation. I heard you on that day also.
So you have been such a motivation, and yeah, anybody I didn't miss, I guess. And Rajesh sir, of course, he is like helping from the very first day, from the dry run day. So yeah, that was all from my side. Thank you. Thank you, Suchi. Thank you so much. Thank you, Sushmita. You have told everything so innocently, so sweetly. So wish you all the best from our side. Thank you so much, sir. Thank you for giving me the opportunity. So I'll ask Nivedita. She heard her singing. She heard her Yes, journey as well. I heard Shuchi Smita's singing. Shuchi, you are a very, you're a lovely girl. Be, this chirpy and this jolly like this ever. You have a beautiful smile. And I must, I would like to actually, say a few words about the secret superstar who was singing from your background. Uncle, you sing beautifully. You were so melodious. And I was actually thinking, कौन गा रहा है? हम लोग तो mute पे हैं. I was actually scrolling ऊपर, कौन unmute में है? कौन इतना अच्छा गा रहा है? But then I realized, no, it's from your background. So give my regards to him. And you guys, you all, I mean, and you very rightly said, Shuchi, that in our Indian society specifically, be it cancer or any kind of ailment, any kind of illness, we Indians have this habit of making a taboo out of everything. I myself, I have been suffering from depression issues since like 5-6 years now. And I mean, in India also, when you talk about going to simple things like seeking help of a counselor or talking about it, people just say ki mera bacha pagal hai, ya they just call it pagalpan. I mean, I sometimes feel so it's so funny that this is actually depression and every kind of ailment. These things can be, it's normal and it's okay to not be okay. And similarly, I think in every kind of scenario, we need to speak out. We need to come together as a community, as humans. I mean, at least that is what is expected out of humanity, right? We should stand for what humanity stands for. So that is what I would like to say. But yeah, performance-wise, very nice. I enjoyed both the songs. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Nivedita, and thank you, Suchi. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. It was nice having me in the group. Thank you so much. Our pleasure, Suchi. I'd like to say one. Sure, Malika. Say a few things. So Suchishmita, so when Hitesh first told me that, I want people to start engaging and I want our patients to speak up, and we don't know how to go about it exactly because it's not really happening the way it should happen, and it's a very time-taking thing and endeavor. So I was going through these posts, and what struck me was Suchishmita's post. So she's like the most she, Akanksha also, both of them, and I think that shows you the fire of a young spirit. Okay, so they don't care, and both of them, I think Suchishmita, because I work with her constantly, so from the very get-go, so positive, so eager to say something, so eager to help, so eager to share her experiences, not holding back at all. I think the amount of content that I have been able to make just with her help, it's amazing. Without her, I wouldn't have been able to do that. It would have been very difficult for me to have that one person to just come forward and share so much. It always takes that one person, just like Jayanti ma'am has done. It's very important to have that one person take that first step and share that first story. And I am so happy, and I think everyone from 4baseCare, I think we all appreciate Suchishmita immensely. Thank you so much. Thank you, Malika, and thank you, Suchi. So now I'll welcome Hemant ji. Hemant ji, welcome. How are you? Please unmute yourself. Let me introduce Hemant ji. Hemant ji is a mechanical engineer joining us from Pune.
and he is the director of Institute of Quality and Reliability in Pune. And he has done amazing works. He has got basically two channels. One is educational channels, that is of Institute of Quality and Reliability. He has delivered so many lectures over there. And secondly, he is an accordion player. He plays piano accordion. He's a musician, beautiful. I mean, he plays amazingly well. So today he is going to play for us. So Hemantji, can we hear from you right now? Yeah, sure. Just before I start my accordion, I would like to congratulate. I think her name was Suchi, right? Suchi, yes. So I was very happy to see her singing and her comments on her experience on the cancer part. I also heard that she's from Nagpur and an engineer. So that's a direct connection with me. I am from Nagpur. I graduated my engineering from Nagpur actually. The other thing is that there is a new cancer hospital which has been started at Nagpur, and it was opened by the Chief Minister and the Deputy Chief Minister of Maharashtra. So that's also Nagpur connection. So very happy to see her singing and her positive attitude, sharing her experience. So thank you so much for her bringing her into this group and sharing her experience. Let me pick up the accordion, and you need to confirm whether you can see me and hear. I'll do that, sir. Because I am using my mobile, but I think it should work well. It should work. It should work. Perfect. Perfect, sir. But do I need to mute myself so that you don't get an echo? No, I cannot. No. We are going to mute ourselves. We will mute ourselves. Okay. So I want to know, Rajesh ji, thank you first of all for inviting me again, and your warm invitations are always there. I mean, I'm not able to join all the time. Sometimes whenever I have time, I would like to join. So my question is, there are three choices of songs that came to my mind. I don't know what I played earlier in this group, but one is a beautiful song from Sujata, which is Jalte Hai Jiske Liye. Beautiful, sir. Done. That should be the first one. Okay. Then the next one I'll talk about after playing that one. Yeah, sure. Please go ahead, sir. And the music director here is, I think, S.D. Burman. And it's from Sujata. It's one of the only songs, or I think one of the only songs, a romantic song that has been played on a telephone. So on the screen, you can see Sunilda playing it for Nutan, who is hearing the song from the other side on telephone. They don't. Not the mobile.
Thank you. बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल. अच्छा सर, बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, मेरे को बहुत दिल कर रहा है, आई वांट टू सिंग 2 लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग. इतना प्यारा सॉन्ग है, इतने प्यारे लिरिक्स हैं. आई जस्ट सिंग 2 लाइंस. दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं. गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं. गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए. तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए. सर मजा आ गया सर, गाना इतना प्यारा था. सुनील दत्त का आपने याद करवा दिया. अमेजिंग सॉन्ग. जाता फिल्म का गाना है. जी जी. दूसरा कौन सा सुना रहे हैं? तो दूसरा जो गाना है उसमें आपको मैं पूछता हूँ, विच वन यू वुड प्रिफर. एक चॉइस है वो मंजिल फिल्म का जो गाना है किशोर कुमार का, रिमझिम गिरे सावन, वो एक है, वो बजा सकता हूँ. या तो फिर दूसरा है ओ मेरे सोना रे तीसरी मंजिल का. उसमें से कौन सा आप पसंद करोगे? चारू ने अनम्यूट किया है, शी इज गोइंग टू टेल. ओके. सेकंड वन, शी सेड सेकंड वन. अच्छा, सेकंड वन. यस. ओ मेरे सोना रे. ओ मेरे सोना. ओके. दैट्स अ फास्ट वाला सॉन्ग है थोड़ा. मजा आएगा सर. दिस इज तीसरी मंजिल सॉन्ग एंड आर.डी. बर्मन. एस.डी. बर्मन के लड़के थे, मतलब ही वाज सन ऑफ एस.डी. बर्मन, अगेन बंगाली पर्सन, very talented musicians, both of them. And this was, I think, one of his first movies, although not the first one, but the one that became very hit. बहुत बड़ा हिट जो हो गया था.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So, Malika? Yes. Thank you so much. That was such a beautiful rendition of these classic songs. Actually, I don't watch that many Hindi movies nowadays anymore, but as a kid, I have watched these movies. And I think my memory of Hindi Bollywood would be these songs. It's absolutely beautiful, sir. Thank you so much for joining us today. My pleasure. Thank you. Welcome. Jayanti? So, sir, I wanted to tell you, Sonare is my and my sister's favorite. वो बहुत अच्छा इसको गाती है मैं गाती वाली नहीं हूँ but बहुत मेरी हमारा बहुत फेवरेट है ये गाना. So thank you for that very beautiful, very wonderful rendition. It was like totally soulful. Thank you. Okay. Thank you. So, Parna, can we hear 2 lines from you? From this me? song? Yes, for this song. Okay. Let's see. ओ मेरे सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझको जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरे सोना मजा आ गया. Very nice to hear that vocal performance also. Thank you. Definitely. ये गाना मेरा और like जयंती said मेरा सबसे अच्छा मतलब तीसरी मंजिल is one of my trademark hallmark films and this song is like one of my hot favorite songs. तो आज तो आपने दिल ही खुश कर दिया इसलिए मैंने इतनी जल्दी गा दिया जैसे ही राजेश सर ने बोला मैंने कहा अच्छा मैं गाती हूँ. Shruti is बहुत देर से silent बैठी है, so I hope you are enjoying. Yeah, sir, the definitely. Performance by Hemant ji. Definitely, sir. It was mind blowing. I am hearing you for the first time, and it was wonderful. And वो एक बचपन की यादें वाली चीज होगी. मतलब ये गाने क्लासिक्स हैं कि आप कहीं पे भी पहुंच जाए ये आपके दिमाग में it enlighten you from all the memories that you have gone through as a child. So thank you for making us revisit that. And Kwanna ma'am, आपकी आवाज तो हमेशा से मतलब जाने दिल पे ही जाती है. So it was lovely, and I'm just lovely listening everyone. It's
so inspiring and entertaining. So thank you everyone for inspiring. Thank you, Hemanji. Thank you so much. Welcome. My It pleasure. was a pleasure. It's such an honor whenever you join. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं अब. I think next we can hear from किसी को जल्दी तो नहीं है ना जाने की? If somebody has to leave early, so I can request. Okay, so otherwise maybe I'll request Panna. Okay, sir. अच्छा, okay, whatever way. No, that's right. No, Chalo, all the best, all the best. So please give a huge round of applause to Panna. Thank you. Thank you, everyone. So just let me know if you can hear the track, please. Yeah, sure. ठीक है, okay.
Thank you. Outstanding, Parna, outstanding, as always. Beautiful song, beautiful. बहुत अच्छा गाया आपने. Thank you. Thank you. मजा आ गया Parna. Beautiful, ma'am. Thank you. Thank you so much, Malika. You were sounding professional singer. Fantastic it was. Marvelous. Thank you. Thank you. Very, very good. Very good. Thank you, sir. I'll ask Jayatri. पागल हो जाती हूँ मेरे गाने सुन के बंद करो Jayatri, you can unmute yourself. वो दिन भर मेरा ही गाना सुनती है वो पक जाती है सुन सुन के मेरा गाना. Yes, Jayatri. So, I do not have any such special skills, okay, like singing music, but I can show you guys something that probably I promised, sir. First of all, I was asking about Parna's singing. Okay. Is it okay? I was confused about Jayatri and Jayanti. Yeah, Jayatri. So you can say something about her singing, Jayatri. Okay, so it was really beautiful because I was listening so nicely. And the way ma'am sang, it was, I must say, it was very professional. It was very soothing. And the way she was singing with the emotions, okay, that was so good. So thanks a lot that today is my first day. I joined here from 4baseCare, and it was so nice to, see you all, listen all your musics. That is really good. Thank you so much. Thank you. I think this is the first of a kind, right, Jayatri? Yes. We've never had something like this. We look forward to having more events like this, and I want to plan something of a different mood, like something funny, nice, engaging talk with Jayanti ma'am. That I'd spoken to her, so it has to be a little funny.
So I'm thinking, trying to brainstorm that I'll catch up with her sometime in the future, and let's have more of these kind of gatherings. Dark humor is my secret superpower. I just love your profile. So it has to be something funny and hatke. So can we have Akanksha now? Yeah, sure. So Yeah, thank you Akansha, very go much, ahead. Parna. Thank you so much. Thank you so Huge much. round of applause for Parna, please. Thank you. So now we can have Akansha. So, Namaste. Namaste, Akansha. So all the very best, Akansha. Over to you. Yes, sir. मैं तो किसी के सबकी तरह का अच्छा गाना गाना तो मुझे आता नहीं है, खैर सुन ही सकती हूँ मैं, लेकिन ना प्रेरणा मैम का गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे खुद पर्सनली ये गाना बहुत अच्छा लगता और मतलब मुझे भी थैंक यू आकांक्षा। और हेमंत सर उस मैम ने गाना गाया अच्छा लगा, समझ में नहीं आया, लेकिन जब कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ बोलता है या गाते ना तो एक वर्ड भी अगर समझ में आ जाता ना कि हाँ ये पकड़, और जब पता लगे हाँ ये सही है, तो लाइक कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो समझ में आया एक वर्ड, लेकिन हाँ इतना समझ आ गया कि सबसे कि हाँ आप लोग क्या कह रहे हो, क्या गाना गा रहे हो। तो आकांक्षा आप अपने आर्ट्स दिखा सकती हैं, यू कैन शो योर आर्ट्स, जो आप आर्टिस्ट हैं बहुत सारे, वो दिखाइए प्लीज हमारे को। सारा है। एंड please. टॉक अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, आपका पूरा आप कौन है, आप क्या करते हैं। मेरा हिंदी बहुत खराब है, ओके सो मैं मलिका व्हाट आई डू इज, पहले इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये अपने आर्ट्स दिखाएं, उसके बाद वी लिसन टू हर। श्योर श्योर श्योर। जो अभी मैं दिखा रही हूँ सब मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो मैंने बनाया है, उससे पहले तो ये है कभी। हाँ प्लीज, क्या बात, बहुत अच्छे कैट्स। तो ये कैट्स तो मलिका की फेवरेट है। आई हाँ, ये मलिका जी की कैट्स हैं क्या? नहीं ये तो बस यहाँ पे मैंने दो और स्पॉट किए हैं कैट पीपल, वन इज जयत्री एंड अनदर वन इज विनीता, राइट? I saw a small kitten raising her ears or something. ये ग्लास पेंटिंग है। अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। जब ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब घर पे नहीं थे, तो उस टाइम ना कि क्या करूँ, तो मैं ये कार्टून है विंग्स क्लब, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। ये एक अलग ही दुनिया में चले जाए, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, बस अपना जो करना, तो इसलिए ये बनाया ऐसे अच्छा लगा। ये अरे वाह, अगेन ग्लास पेंटिंग। ना ये ग्लास पेंटिंग नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये एमडीएफ बोर्ड पर बनाया है। अरे वाह, एमडीएफ बोर्ड के ऊपर, वेरी गुड। वो जो पीछे स्टिच है वो भी आपने बनाया है? हाँ मैंने स्टिच वाला टी शर्ट पहना हुआ है, वो मेरा फेवरेट कार्टून है। मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत क्यूट है एंड इट्स लाइक मेड सो परफेक्ट कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने बनाया है। मुझे ऐसा लगा कि स्टिकर चिपकाया हुआ है। उसमें बहुत टाइम लगा क्योंकि अब उतना हाथ तो मतलब उतना बैठ नहीं पाते आप पेशेंट से, तो बहुत दिन लग गए उसी को बनाने में। और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये वाटर कलर है। वाओ, कैन यू प्लीज ट्रेन मी इन वाटर कलर, बिकॉज आई यूज टू डू इट। मैं तो पहले करती थी, मैं जब मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हुआ है तो उसमें मेरा सब्जेक्ट था पेंटिंग, बट फिर जॉब करते करते ना पूरा हाथ ही छूट गया। दिस इज सो प्रिटी, प्लीज टीच मी ना वंस अगेन। ये हाथ ही अभी ना, ये ट्रीटमेंट जितना चला है ना उस बीच में मेरा हाथ भी थोड़ा खराब हो गया है, अभी सीखी ट्राई कर रही हूँ। पर ये बहुत सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल आकांक्षा। ये अभी बस ट्राई किया है पेपर से, पेपर कट्स करके कट करके उसको अभी पेस्ट करके बनाया है। बहुत अच्छे। वाओ, आपको वो आउल दिखा दीजिए, वही दिखा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। This is the cutest thing. थोड़ा मंडाला आर्ट का भी शौक है, वो भी दिखा दो। बहुत अच्छे। सो नाइस। मतलब
पता नहीं अब जब से बीमार हुई, इतना टाइम पहले तो नहीं मिलता था, जो स्कूल में या कॉलेज में असाइनमेंट मिला सिर्फ वही चलता था। फिर अब तो अपने लिए खुद टाइम है, तो जो मन करता है जो भी बस बना दिया। बट आप बहुत बहुत अच्छा। गिफ्टेड हो, बहुत गिफ्टेड हो, बहुत सुंदर, लाइक एवरीथिंग। नहीं तो सर मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई वाटर कलर करता है तो सिर्फ वही उसकी स्ट्रेंथ होती है, फिर वो इतना अच्छा स्केचिंग नहीं कर सकता या फिर मंडाला नहीं बना सकता, क्योंकि फ्री फ्लोइंग कलर्स की आदत हो जाती है, इतना स्पेसिफिकेशन नहीं आ पाता है। बट शी इज लिटरली गुड एट एवरीथिंग। आप उनका स्केचिंग देख लो, फ्रॉम फ्लफी कैट्स टू लाइक यू नो वाटर कलर टू ग्लास पेंटिंग टू एवरीथिंग, इट्स fabulous. And not only that, Akanksha is a very good photographer as well. अरे When वाह, she क्या visits बात है। Mumbai, she clicks nice photos, isn't it? Great. Particularly for Marine Drive area. She has shown me beautiful photos, whatever she clicked last time. So nice. आपको एक पुराना वक्त दिखाया, मतलब कौन ये कॉलेज टाइम में बनाया है एक, ये मुझे खुद सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है। Gorgeous, very very beautiful. बहुत अच्छी आकांक्षा। Skill level. I guess this is the first painting that you sent to me, right, Akanksha? आपने जो मुझे एक कलर मुझे पहले भेजा था। क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन लगे थे इसी को सिर्फ बनाने में, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ना एक जो पेशेंट होता है ना बैठने के लिए, कि आप बहुत ज्यादा, अब तो बिल्कुल ही मुश्किल से ये लगता है कि बनाया ना, अच्छा बना तो ठीक है, अगर नहीं बना तो ये लगता है कि छोड़ दो। लेकिन अब तो खैर पहले से बहुत सही हो गई। बहुत अच्छी आकांक्षा। मन नहीं लगता था पहले बनाने में कुछ। एक मिनट, ये पोर्ट्रेट है। वाओ, अरे वाह, ये कौन है, किसका पोर्ट्रेट है? साउथ एक्टर है, अल्लू अर्जुन। अरे वाह, ये उषा जी को मालूम होगा और रमेश जी को। नहीं, हमें भी मालूम है। अरे वाह, अरे वाह। I recognize him now. Very आप nice. एक मिनट, आप किसको पहचान जाओगे शायद। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह रणवीर, ये स्केच बनाया आपने? हाँ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ये सब बहुत पहले बनाया था मैंने, मतलब गायत्री मैम को पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा बिगाड़ दिया था। दिखा रही इसमें। ये किसका है? गायत्री मैम। जयत्री मैम का तो बहुत अच्छा है, ये तो बिगाड़ा कहाँ है, ये तो बहुत अच्छा बना है। ये थोड़ा सा वो नहीं, बहुत अच्छा है। जयत्री मैम ने बोला कि आपको बिगाड़ा है? नहीं, मैंने खुद से ही बनाया था। It's very nice actually. Thank you. Trying to compare. वो पता नहीं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट थी वेरी नाइस बनाने की, मैम का बन गया। बहुत अच्छा। लवली वर्क आकांक्षा। तो आकांक्षा बहुत ही अच्छा। और अब आपके बारे में कुछ जान सकते हैं हम? बताइए अपने बारे में ब्रीफली, इफ यू कैन, अपने बारे में बताइए हमारे को। मैं एक फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो और ड्राइंग ये सब तो अच्छा लगता है। ये मेरा कल बीमारी ऐसा था कि छोटी छोटी गांठ गर्दन में स्टार्ट हुई, तो पहले लगा नॉर्मल होती थी, हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये आती थी और फिर चली जाती, फिर एकदम से ना पेन स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा। फिर चेकअप कराना स्टार्ट किया, तो FNAC हुई, उसमें भी लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। फिर उन्होंने बोला सर टीबी हो सकती है, तो फिर उसके भी बहुत सारे टेस्ट करवाए, टीबी की दवा भी खाई कुछ टाइम, थोड़ा कि कुछ टाइम खांसी, पेन बॉडी में बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, फीवर भी कभी भी आ जाता था, कुछ भी, तो दवा चली, लेकिन कुछ उसमें पता नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने फिर से FNAC की, उनको डाउट हुआ कि कैंसर हो सकता, लेकिन उस हमें कुछ पता नहीं था कि क्या है, और वो बस बोलते बेटा आपको कुछ ऐसी बीमारी है, मतलब स्पेशल कुछ आपको ऐसे हो गया है, तो अब घबराना नहीं हो। तो ठीक है, मुझे फिर दीदी और भैया वो डॉक्टर से बात की, उनको बता दी थी, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मतलब मेरी दादी भी उसी टाइम बीमार हो गई थी, उनका मतलब हार्ट फेल हो गया,
और ईसीजी उनका मतलब तो अच्छी है, तो उसी टाइम हार्ट फेल हो गया, उसी टाइम हम अपना अलग ही चल लगे, अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं और चेकअप ये सब हो रहा है। तो उस टाइम शायद दीदी भैया ने किसी को नहीं बताया घर पे कि आकांक्षा को ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो वहां पे हम लोग टेस्ट के लिए गए थे, अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल। तो वहां पे उन्होंने नाम लिया और बोला कि कैंसर का डाउट है, कैंसर का टेस्ट होना है कैंसर के लिए। तब सुना, तो जब पहली बार सुना तो एकदम से शॉक लग गया, थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन ठीक है, फिर लगा कि क्या है, हो जाएंगे, एज है अभी तो ठीक हो जाएगा, जल्दी रिकवरी हो जाती, ये सोच के ठीक है हो गया। फिर उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट टेस्ट कराया, तो उन्होंने सैंपल भेज दिया बाहर ये टेस्ट के लिए। फिर होली का टाइम था, होली हो चुकी थी, एकदम से पैर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, पैर में बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। फिर मतलब मेरी बड़ी मम्मी उन्होंने ऐसी मालिश वगैरह कर दी कि थोड़ा सही हो जाए। तो उस टाइम तो ठीक है सही हो गया सोकर, लेकिन जब सोकर उठे पैर इतना ज्यादा सूज गया था कि उसको मतलब हिला भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब उस टाइम बहुत ज्यादा, फिर घर पे पता चला सबको कि क्या है, जब बताया घर पे दीदी और भैया ने, तब एकदम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था कोई, इस टाइम होली थी, छुट्टी थी, सब बंद। डॉक्टर बहुत सारे पूछा, कोई कोई नहीं। फिर ऑनलाइन कंसल्ट किया, उन्होंने बोला दवा खाई। फिर क्या कि कहाँ पर जाए चेकअप के लिए, कहेगा हमारे आसपास भी ग्वालियर है, आपने सुना हो ग्वालियर कानपुर, तो बोला लेकिन पापा नहीं, भेजना है तो सब बाहर भेजो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता इसके लिए। वो नॉर्मली स्टेप कीमो या वो उसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब आपका कोई गारंटी नहीं है आपको सही होगे कि नहीं। तो गए, फिर कुछ दिन बाद मुंबई गए, सीधा बुक किया गए। वहां पे पहले तो दिक्कत थी क्योंकि भैया थे, तो वही लेके गए, चल नहीं पाना बिल्कुल भी। बहुत उस टाइम ये लगता था कि क्या क्या हो गया, क्या थी, मतलब पूरा दिन यहाँ से वहां भागते रहते थे कुछ ना कुछ। अब एकदम से बिल्कुल बैठना बहुत वो लगता था कि क्या। फिर वहां पे स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। पहले हेड में गए, वहां पे बोला हेड डिपार्टमेंट की नहीं, सिर में नहीं, तो उन्होंने फिर गले के डिपार्टमेंट में करा। वहां पे उन्होंने कुछ दिन ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने पैर का चेकअप, अल्ट्रासाउंड वगैरह, डॉपलर हुआ, तो उसमें पता चला कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई पैर में बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने पूछा कि ब्लड क्लॉटिंग मतलब किस वजह से होती है, उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि ब्लड क्लॉटिंग जब होती है जब आप एकदम लेजी पर्सन, कुछ नहीं करते हो, बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं। तो फिर वो लेजी पर्सन कैसे, इनकी सबसे ज्यादा तो हम ही भागते रहते, पूरे घर में ही है, घर छोटी हूँ घर में सबसे, तो कुछ भी काम हो घर वाले पहले तो नाम सिर्फ आकांक्षा, कुछ ही काम है आकांक्षा, तो पूरी भागा दौड़ी सब करना है। तो ये कैसे हो गया, तो ये लगा टाइम, तो ठीक है। तो उसमें फिर बायोप्सी वगैरह सब बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि इंजेक्शन लग रहे थे उसके ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो उसमें ब्लड बहुत थिन था। तो वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं अभी नहीं कर सकते आपकी, कि ब्लड का उसमें आईएनआर कम है, बहुत मतलब डेंजर है अभी थोड़ा। तो बहुत डॉक्टर ने बहुत उनसे बोला, प्रेशर डाला कि नहीं आपको करना पड़ेगा, इतने में हो जाता है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ रहा था प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो फिर उन्होंने किया बायोप्सी की, फिर उन्होंने सैंपल भेजा, फिर लंग्स में भेज दिया, फिर पता चला कि लंग्स में। तो उन्होंने फिर वहां पे भी उन्होंने किया, तो वहां पे जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि एक तो सबसे ज्यादा यंग एज, दूसरा उन्होंने बोला कि लड़कियों को बहुत कम होता है ये। मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि अभी तक कोई मुझे नाम नहीं बताता है, सिर्फ पता है क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला इतना सुनाओ, फिर मुझे बाहर भेज दिया। फिर दीदी से जो भी बात हुई भैया से, उन्हें ही पता है। फिर वहां पे भी चला, फिर एक और टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, तो फिर उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने अल्ट पॉजिटिव करके मतलब कोई टेस्ट है, तो उनके उसमें पॉजिटिव आया, तो फिर उन्होंने डिपार्टमेंट फिर चेंज कर दिया, क्योंकि मार्च से इंडिया आ गए। फिर वहां पे पता चला, मतलब जब पहली मीटिंग थी घर पे पता चला, डॉक्टर गए वहां पे, सबसे पहले बन्ना मैम मिली थी, और वो डॉक्टर उनका नाम तो नहीं है बता मुझे, लेकिन हाँ उस टाइम मतलब मेरे फाइनल ईयर थी जब बीमार हुई थी, एग्जाम थे, तो पूरी बीमारी का किसी चीज का गम नहीं था कि क्या है क्या, कुछ नहीं। लेकिन जब हम मतलब ये लगता कि बस एग्जाम देने को मिल जाए और कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही होते हैं, बाकी प्रैक्टिकल होते हैं ज्यादा। तो फिर वहां पे उनसे उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर हमने सिर्फ उनसे बोला कि सिर्फ एग्जाम देने जा सकते कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का था काम। तो उन्होंने बोला नहीं, जब आप पूरे सही हो जाओगे एग्जाम तो आप बाद में भी दे दोगे। बात तो सही थी उनकी, लेकिन उस टाइम ना जब वो सुन के ना बहुत ज्यादा बुरा लगा था। पूरी बीमारी कभी तक नहीं लगा कि क्या है, उस बीमारी की एक चीज गली थी कि
ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाई। फिर वहां पे वंदना मैम गई, दीदी से बात की, क्या किया, फिर वहां पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। भैया लोग चले गए थे, पहले स्टार्टिंग में रहे वो लोग साथ में, लेकिन ये था कि उनको भी जॉब्स थी, कब तक वो छुट्टी लेते आए वो, तो वो चले गए। फिर मैं और दीदी, बड़ी बहन मेरी, हम दोनों रहे वहां पे, और रहने के लिए देखा कहाँ के अलग सेट सब। तो वहां पे जहाँ हम लोग रहते थे, मतलब और भी पेशेंट थे, वो पहली बार तो ये लगता था कि आकांक्षा रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, अकेली रह, कि हम मतलब ना किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है बहुत जल्दी, बहुत टाइम लगता है किसी से बात करने में और करने में। तो उन्हें ये लगता कि पता नहीं कैसे है ये क्या। फिर वहां पे जाकर वहाँ और भी लोग, वहां जितने भी थे सब मतलब ना बहुत छोटे छोटे थे वो, तो मतलब कोई 15 साल का, कोई 14 साल का। फिर मतलब ये लगा था कि यार हम तो इनसे इतने बड़े यार, ये लोग, इन लोग को देखो, इन लोग को कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, अपना रह रहे हैं, मतलब मोटिवेशन मिलता है उन लोग को देख के कि मतलब इतने छोटे छोटे होके ये लोग अपना अभी तक ना रो रहे हैं, ना कि टेंशन है, कुछ नहीं, अपने रह रहे हैं, कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उल्टा एक दूसरे से बात करने में ना, आप करोगे ना वहां पे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे ना कि ये लगता है कि हाँ। वहां पे एक फ्रेंड बनी थी, फ्रेंड ही छोटी है, लेकिन मतलब हम दोनों में के पॉप, ये हमें मुझे पसंद उसको, तो एक कॉमन चीज थी। तो रूम चेंज हुआ था कि उसको पैर में प्रॉब्लम थी, तो वो सीढ़ियों की उसने रूम चेंज शिफ्ट किया, तो उसका ना उसने पोर्ट्रेट बनाया था। तो वो मैंने देखा, मैं पहचान गई कि किसको बनाया, तो मैंने उससे बोला, जैसे बात ही। तो उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, कि उसने बोला मुझसे कि दीदी, भगवान ने अगर अपन को बीमार किया है, बीमारी ये दी है, तो वो सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि अपन उनसे लड़ सकते हैं। हर किसी को नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान उससे नहीं लड़ सकता, तो ये बीमारी उसे वो नहीं देते। वो बात ना मतलब इतनी अच्छी लगती है ना उसके, अभी तक वो बात याद है। जब भी मतलब खैर अब वो थोड़ी परेशान हो जाए तो कभी वो डरते हो, उसको बात, उसकी बात ही याद दिलाती कि तुम क्यों रो रहे हो, ऐसे क्यों परेशान हो रही हो। तो मतलब बंगालीज ना सच्ची में बहुत स्वीट होते हैं। वहाँ मतलब इतने सारे बंगाली मिले हैं ना। एक दीदी है संगीता दीदी, वो भी ऐसी मिली, वो मुझे और मेरी बहन को अपनी बहन मानती है, जब भी जाते हैं वो भी वहीं पे होती हैं, तो मतलब साथ में ही रहते हैं हम लोग, मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि वो जब भी मिलती हैं। हाँ, तो ये सॉरी बोल गई, मतलब ट्रीटमेंट चलता वहां पे रही इसी करके, वो टाइम इंजेक्शन इंजेक्शन लगते थे वहां पे। तो डॉक्टर बोलते थे कि खुद से क्यों नहीं लगाती हो। हमने उन्हें एक बार बताया था, एडमिट थी कुछ टाइम क्योंकि पानी भर गया था नीचे, हार्ट के नीचे। हाँ, तो वहाँ एडमिट थे, वहाँ डॉक्टर्स ने आके बोला तो आप खुद क्यों नहीं लगाते हो, तो हमने बोला नहीं। हमने उन्हें ये बताया कि पापा को लगाया है, इंसुलिन शुगर है उनको, तो बोले तो क्यों नहीं लगाती हो, तुम तो पापा को लगा चुकी हो ना। नहीं, वो खुद को लगाना अलग चीज है, किसी और को लगाना अलग चीज है। मैं कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ना बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में बहुत टाइम लगता था, तो एक टाइम तो लग गया, स्टार्टिंग में 2 टाइम लगा, सुबह और शाम, तो डेली इंजेक्शन लगाना पड़ता था। तो अभी लगा क्या करे क्या करे, फिर कहा चलो खुद से ट्राई करते हैं। तो पहले थोड़ा लगा, फिर लगा लिया, फिर बीच में कभी कभी एकदम से हाथ काफी लगा, डर के हाथ बहुत पेन हो रहा है कैसे। फिर क्या बोलते ना, पता नहीं, एक रीजन था कि उस टाइम बहुत गर्मी थी, अब लगवाने के लिए क्लिनिक जाना पड़ता था। मतलब वो नॉर्मल इंजेक्शन था, सिर्फ आपकी स्किन से वो लगना था। इतनी गर्मी थी कि लगता था कि कौन जाए खुद से, कि इतनी गर्मी में कौन जाए, इस चक्कर में खुद को इंजेक्शन लगाना भी सीख गए। मतलब जब से अब जरूरत नहीं पड़ती है खुद ही कर लेते। अब बंद उसका, ब्लड क्लॉटिंग ठीक हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता रहा। फिर मतलब डॉक्टर ने कहा ओरल कीमो चलेगा, लेकिन ओरल कीमो स्टार्ट होने में टाइम था, बोला कि इतना आप रुक नहीं सकते। उन्होंने क्या, कीमो ले लो, मतलब एक कीमो, फर्स्ट कीमो आपको लेना पड़ेगा। फर्स्ट कीमो था, तब डॉक्टर ने बोला था वो वहाँ पे कि जब कीमो मिलता है तो उल्टी होती है, मतलब लूज मोशन, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा लगा कि क्या कैसे होगा, तुम्हें दवा सब देती, लेकिन मेरे साथ उल्टा केस था। मैं जब सुबह उठी ना, एकदम इतनी एनर्जी थी, लग ही नहीं रहा था बीमार है, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उठ के ना पूरा कमरा ऑर्गेनाइज किया, क्या सामान किधर रखा है सब। दीदी मना करी, क्या कर रही हो, अभी तो सही हुई, थोड़ा नमकीन नहीं होती, बिल्कुल कुछ लग ही नहीं रहा, अच्छा लग रहा है, एकदम एनर्जी सी लग रही। लेकिन नहीं, बोले बैठ जाओ अभी तो सही हो, एकदम से मत करो, लेकिन नहीं। पूरा कमरा ऑर्गेनाइज किया, सब किया। उसके बाद भैया थे उस टाइम, तो उन्होंने बोला चलो तुम्हें सही हो तो तुम्हें थोड़ा घुमा लाना। तो पहली बार हम लोग वहां पे जुहू बीच गए, तो पहले उस टाइम, लेकिन तब भी थोड़ा था कि पानी में ज्यादा देर खड़े नहीं रह पा रहे, ठीक है, लेकिन पहली वही ट्रिप थी जुहू बीच की। उसके बाद फिर भैया चले गए, फिर दवा आ गई,
दवा भी ऐसी नहीं आनी थी, वो घर पे उन्होंने एड्रेस पर भेजी थी। घर से फिर वापस वहां पे हमारे पास मुंबई में आई, वहां पे दवा आई, फिर दवा स्टार्ट की पहले दिन, तब कुछ पता नहीं था उसके साइड इफेक्ट कैसे क्या होंगे। खाया, खाना खाने का जैसे नॉर्मली होता है, खाना खाया और दवा खा लो, ये किया। जैसी दवा खाई उसके 10 मिनट इतना जितना खाया था उतना सारा वॉमिटिंग में निकल गया। सिर्फ पता नहीं था पहले दिन, ठीक है। फिर रोज यही हुआ, लगा कि पहले दिन हो गया, तो रोज यही होता था। फिर ना एक चीज करके देखी कि दवा के 1 या 2 घंटे पहले खाना खा लो, या मतलब ब्रेकफास्ट कुछ भी कर लो, उसके बाद फिर दवा खाओ तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा उधर पे तो प्रॉब्लम नहीं हुई खैर, लेकिन जब गए तो डॉक्टर ने फिर बोला कि आप घर जा सकते हो। 1 हफ्ते बाद उन्होंने बोला कि आप घर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मतलब दीदी और हम इतने ज्यादा खुश थे ना कि उस दिन मतलब जो टिकट सबसे पहले मिली ना घर आने की, वो ले ली। मतलब आज छुट्टी बोला, कल सुबह घर के लिए निकल गए, ये हाल था। तो वहां पे गए ट्रेन में पहले आकांक्षा, आकांक्षा मेरे को बुरा लग रहा है कट शॉर्ट करते हुए, मेरे ख्याल से टाइम काफी ज्यादा हो गया। आई नो हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो थोड़ा सा वी गेट ओवरवेल्ड, बट मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वील हैव टू वाइंड इट अप आल्सो। थोड़ा सा अगर ब्रीफ में आप इसको खत्म करें। हाँ हाँ बिल्कुल। बस कुछ नहीं, हम लोग तो उधर पहली बार कर गए, तो मतलब जब पहली बार आए मतलब ट्रीटमेंट के बाद, तो थोड़ी घर में प्रॉब्लम हुई, खाना नहीं खा पाना, वॉमिटिंग दवा की वजह से बहुत हुई। अभी भी होती है खैर, अब उतना नहीं है, डॉक्टर के लिए बॉडी ने की नहीं होती है। जब सही होने तो फर्स्ट गए थे वहां पे चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप में, तब वहां पे उन्होंने बोला ठीक है। डर लगता है जब भी वहां जाना होता है, अभी भी मुंबई, तो ये लगता है पता नहीं क्या होगा, वापस सारे की नहीं आ रहे। आज जाने के पहले एक आदत है कि बीमार होंगी, मुंबई जाना है डॉक्टर के पास, बीमार होके जाना है, सही होके नहीं जाती हूँ यहाँ से कभी भी, घर से अभी भी जाऊंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब तो ठीक है, दवा खा रही हो, कुछ नहीं है। और तो मैं Really बोलने में inspiration, really an inspiration. मैं थोड़ा ना बोलने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कोई भी अच्छा नहीं है, हम यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी सुनी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतनी खुशदिल हो, इतनी आर्ट्स और पेंटिंग में बिजी रखी हो अपने आप को, एंड अमेजिंग, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच। Thank you, Akansha. आई थिंक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकांक्षा। Yeah, and stop saying that जब जाऊंगी बीमार होके ही जाऊंगी, मत बोलिए, बोलना मैं छोड़ बोलती दीजिए, हूँ क्या ना, पता मैं चेंज हो हाँ जाए। हाँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं अच्छी रहूंगी, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कुछ दिन पहले या तो जुकाम होगा या फीवर आ जाएगा, या खाना ही नहीं खाऊंगी बिल्कुल ही, कुछ ना कुछ। मतलब मुंबई जाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आप मुंबई जा रही हूँ, और उससे कोई पूछेगी ना, नहीं जाना। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि अब फिर मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे नहीं मिलना, बाहर मिलना। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकांक्षा। एक्चुअली टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो अब ऐसा करते हैं बैक टू बैक सब परफॉर्म कर देते हैं, जितने परफॉर्मर्स हमारे बचे हैं। चारू इज देयर, मेघना इज देयर, निवेदिता इज देयर, माई सेल्फ, एंड श्रुति, यू वांट टू परफॉर्म? यू आर परफॉर्मिंग? ओके, तो हम 4 लोग बचे हैं, हम बैक टू बैक परफॉर्म कर देते हैं, तो विल नॉट हैव एनी कमेंट्स, एक के बाद एक स्टार्ट कर देते हैं। तो चारू हैज टू लीव अर्ली, तो विल आई रिक्वेस्ट चारू टू परफॉर्म फर्स्ट। सो प्लीज गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू चारू। इसके बाद मेघना, यू कैन स्टार्ट, देन निवेदिता, एंड देन लास्ट I'll perform. So we can mute ourselves. रूह से बहती हुई धुन ये इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से, खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां, खो गए
भी तो डर नहीं, रुक जाने की जरूरत नहीं, कागज के पर्दे हैं, ताले हैं दरवाजों पे, पानी में डूबे हुए ख्वाब अल्फाजों के, खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहां, खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहां, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई मारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ, कोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। Thank you so much. Amazing performance, amazing. Absolutely Thank divine. you, thank you. Beautiful, beautiful performance. Very Malika, beautiful. Very, very beautiful. thank you so much, Aru. Yes. So I think now we can start with maybe Nivedita. You want to perform first, or Meghna, you want to go? Meghna, you want to go? Yeah, actually, Yeah, can please, go. please, Yeah, you can start. So we'll have Meghna. So she is an amazing singer और बहुत अच्छा गाना गाती है, and she is going to sing an amazing song today. So I've बहुत never बढ़िया. sang outside family. So if there This is any also a family. You are now part of Passion Wale family. no, just disclaimer, if their voice shaking No, and not all that required. is yeah. Not required. Just be normal. Be normal. Okay. As you sang today in the morning, na, ऐसे ही गाओ, बहुत अच्छा गाओ. All the Okay. best. Thank you. Have you checked your settings? Original Yeah, song? yeah, it's on, Sir, it's on. Please go sir, ahead. sir, Yeah, before Charu. that, yeah, sir, can I log in through my phone, and because like I have to get ready also and I have to leave, Please but my do that. camera will be off, but I want to listen to all the performances. Yeah. Please, Yeah. you first log in with your mobile and then you can leave this. Okay, sir. Okay. All the best, Meghna. Yeah, thank you. Is it audible? One second. Yes. Have you started the music? Perfect. बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा. चले ही जाना है, नजर
चुरा के यूं फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे कि कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे है रात अपनी जो तुम हो अपने किसी का फिर हमें डर क्या बाहों में चले हमसे शर्म क्या पर्दा हो हमसे शर्म क्या पर्दा थैंक यू Beautiful, Meghna. Thank you so much. Beautiful, beautiful, Meghna. बहुत अच्छे. Too good. Thank you. Thank you so much. So now we can hear from Nivedita. Okay, first of all, Charu and Meghna, you both sang beautifully. Charu, you as always, you sang very beautifully, and Meghna, you have a lovely voice. Please sing more often. Okay, I'm planning to make her sing more often. Yes, yes. Definitely. Now she's part of our family now. She can join. She can join anytime. In fact, I'll send her the link every time. She's very, very soft. She's so soft and she's so shy. So I think we'll slowly get her to yeah. talk more and sing more. Sure. Rajesh, one song or two songs? One song. One song? You want to sing a medley, sort of a medley? Not medley, but मैंने दो गाने के छोटे-छोटे वो हाँ, that will do. Perfect. मजा आ जाएगा. So one Bengali song. अरे वाह, क्या बात है. So huge round of applause for her. And Nivedita. one Hindi. मजा आएगा. Both these songs, I love these songs. So let me just switch on this musicians वाला, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा हमेशा. Yeah, please. Okay. Original sound on. Yeah. Done. And again, sorry अगर बुरा होता है because I just came from outside. मैंने कोई practice नहीं की है, कुछ नहीं किया है, ठीक है? So apologies beforehand. Okay. মন একে একে দুই একাকার আমি তুই আরে না চোখ ফিরিয়ে একটু হাস নেই মনে কি কিছুই তোর ঠোঁটের ডানা ছুঁই মিলবে সব জীবনের ক্যালকুলাস স্মৃতিরা গেছে পরবাস কথারা হয়েছে নিঝুম এ বুকে তবু 12 মাস ভালোবাসারই মরশুম ভালোবাসারই মরশুম নামে ডেকে যাই সে আগে তোকে চাই
সেই যে সেই তাকালে সর্বনাশ. Now the Hindi song. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों की तिनको से चल बनाए आशियाँ. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ. ना हो चार दीवारें फिर भी झरोके खुले, बादलों के हो पर्दे, शाखी हरी पंखा झले, राह कोई तकरारे, हर मस्ती ठहाके चले. प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के चल ताले लगा के हम गुमसुम तराने चुप के गाए आधे आधे बाटले. आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ. Very beautiful. Excellent, excellent. Take a bow. বাংলাটাও খুব ভালো হয়েছে. Awesome. খুব ভালো. She has got an amazing voice, and she's trained singer as well. And Nivedita, you tell something about your app also. Actually, she is following her passion, and she has combined it with her profession. Actually, I always I am by qualification I'm an MCA, but because of my language, because of my love to creativity and art and literature, I started pursuing my career in content creation and any kind of creation. And right now I have actually joined one startup the startup has been started by a person I know, and this is called Suno Sunao application. And this is actually a very one of a kind application in India. We are India's first short audio app. We are bringing back that radio culture wherein there are many people who are equally talented, who want to pursue their who want to showcase their talent, लेकिन because of maybe they are camera shy, या तो फिर फैमिली का प्रेशर होता है कि कैमरे के सामने नहीं आना है, पढ़ाई करना है, या तो कोई हाउसवाइफ है वो अपने सास ससुर के डर से कैमरा के सामने नहीं आ पाते हैं. एंड thanks to the new social media culture that people always judge and bully you, उस डर से भी बहुत लोग सामने नहीं आते हैं. So we are at completely audio app, जहाँ पे कोई भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप क्रिएटर हैं, कुछ भी करते हैं, एनीथिंग ऑडियो, वेदर यू आर अ मिमिक्री आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन, singer, musician, poet, writer, author, storyteller, anything, you can just all you have to do is download this application for free, start creating, uploading your creations for free. And yes, I mean, if you are good enough, if we see that your talent is good, the application and the company will promote you. We started this from Orissa. Now we have stepped into the West Bengal market, and slowly within this year we want to capture the entire India market. So yes, thank you Rajesh for giving me this opportunity. Thank you. So now, okay, now can I sing now? मैं गा सकता हूँ अभी?
और कोई परफॉर्मर है? Jayatri wanted to share something, I suppose, before I start. Jayatri. Yeah, Jayatri, you wanted to share something, no? Again, I'm kind of becoming confused. No, I just wanted to share my experience today, sir, because this is the first time when I'm meeting you all. And when we met for the first time, I really did not expect that this will be, I mean, the structure of the event is going to flow like this. But when today I'm here, and I'm really impressed to see that even in the online also, we can share our emotions, our journey in such a beautiful and meticulous way. So that's the only thing that I wanted to say here. And I wish that even for the next meeting also, I will be a part of it so that I can listen to your story. So as a psychologist also, it's a great pleasure for me to know about, everyone's perspective and to put it in a holistic manner for the better quality of life structure. So thank you all once again. So nice. Thank you. Thank you, Jeffrey. So now I'll start. I'm going to sing a Kishore Kumar song. बहुत पुराना सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा इसके लिरिक्स हैं, ब्यूटीफुल लिरिक्स. तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग. मैं कुछ गाना तो कुछ और जा रहा था, बट वो थोड़ा सीरियस लगा मेरे को, सो आई थॉट कि ये वाला सुनाता हूँ आज. सो वेलकम चारू, वेलकम बैक. आई होप यू आर लीविंग और यू आर ऑलरेडी लेफ्ट. Sir, I've already left. I'm on my way. I'm walking. Okay. So then you can listen. To the song. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे. कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले. जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए. सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो,
बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिलके यूं चलते चलें, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। सर बैंग ऑन। वाह, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा था सर, एकदम लाइक परफेक्टली अलाइंड विथ योर वॉइस, सो गुड। वेरी सोलफुल। इतना खूबसूरत गाना है और सर आपने इतने खूबसूरती से उसको अदा किया, एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो जयंती, It was very soulful, sir. It was like so apt. मतलब जो perfect closing होता है ना वो था. And Nivedita ma'am, that was beautiful. Bangla Talk was done. Thank you. Thank you. I think all the performances today were absolutely amazing. So everybody performed so well. Ayushi has just joined. Hi, welcome Ayushi. Ayushi is on a vacation, family vacation, and Hello, she is an everyone. amazing. Though she's an engineer, she's an IT engineer, and she's an amazing poet. And she so always much, makes sir. it a point to join. कभी मिस नहीं करती हैं, but आज वेकेशन पे हैं तो but still she has made it थोड़ा possible सा to लेट join. हो गया सर। अरे कोई बात नहीं। आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस रहे, बहुत अच्छा सेशन रहा, तो आई सारी होप परफॉर्मेंस देखूंगी जो रिकॉर्डेड आप डालेंगे यूट्यूब पे, मैं मिस नहीं करने वाली हूँ कोई भी परफॉर्मेंस। okay. So can we hear Ayushi, are you going to perform or Aditri is going to perform? सर आदित्य तो नानी के साथ बिजी है, वो अभी आरती करवा रही है, अभी हम जस्ट वापस आए। I think it's very late, but still I think we can hear from Ayushi. Malika? Yes, and Hitesh actually wanted to, like, he's in between calls the whole day, and I wanted him to just come and meet, the people he has missed. Yeah, definitely. No, I was in between the calls and I was listening and I was like missing the whole thing. I think fantastic performances. Let's listen to Ayushi now. Let's listen to Ayushi. So huge round of applause for Ayushi first. ओके सर। सर परफॉर्मेंस के पहले मैं कुछ दो लाइनें कहना चाहती हूँ कि Please. मैं बहुत सालों से ना सोशल मीडिया से दूर थी। आई एम ऑडिबल? Yeah, you are audible. यस सर, मैं ये कह रही थी कि मैं बहुत सालों से सोशल मीडिया से दूर थी, और जैसे कभी कुछ पाने के लिए दूरी अपनाई तो कभी कुछ खो दिया तो किनारा बना, लेकिन जब पाया कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है तो सोचा कि जो भी है उसे सबको बांटा जाए, और फिर कुछ 2-4 थॉट्स अपने शेयर किए सोशल मीडिया पर, और एक दिन आपने कनेक्ट किया और इस खूबसूरत परिवार का आज मैं हिस्सा बन गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे किस्से कभी किसी को, मतलब किसी तक पहुंचेंगे भी और लोग उसे सुनने के बाद उसे सराहेंगे भी। तो पहले कभी मैं जो जैसा जी करे खुद के लिए ही लिखती थी, खुद को खाली करने के लिए कह सकते, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद जो थोड़ा बदलाव आया है, मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है। मैं ये महसूस कराता है कि मैं हूँ,
और अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मुझे लगता है कि मैं अपनी पोएम स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने उस वक्त लिखी थी जब इसकी 3rd एनिवर्सरी थी इस प्लेटफॉर्म की, बट मैं अनफॉर्चुनेटली कह नहीं पाई इसे। तो इस घराने के बारे में जानते हैं कि ये घराना जो है वो क्या है। पैशन वाले। भागती उछलती अंध दौड़, भागती उछलती अंध दौड़ में आगे बढ़ने की प्रचंड होड़, उम्र से युवा हो या हो अपने प्रौढ़, समस्याओं की सिलवटी गागर रख एक ओढ़, जो दिल की सुन दिल से दिल को बुनता, जो दिल की सुन दिल से दिल को बुनता, इस दौर में जो अपने पैशन को चुनता, समझो रूहानी रूह को वही सही सुनता, समझो रूहानी रूह को वही सही सुनता, जो सन्नाटे में भी आशाओं के गुब्बारे में जान फूट, राह में अपनी डटा रहे भरोसे की कोशिशें अचूक, जो दर्द की गुफा में भी शेर सा दहाड़ से, जो दर्द की गुफा में भी शेर सा दहाड़ से अपने दायरे तोड़ दे हौसलों के पहाड़ से, जो गमों के अंधेरे में उल्लू सी नजर रखे, जो गमों के अंधेरे में उल्लू सी नजर रखे, मेहनत से जो कटे ना कर्म जिसे अजर लगे, अजर मतलब भगवान, कुरीतियों को छाट कर स्वयं से ही जो कुजर बने, कुरीतियों को छाट कर स्वयं से ही जो कुजर बने, कुजर मतलब श्रेष्ठ, अपनी शालीन तेज से वो औरों को भी उजर दे, सींच ले अपने ज्ञान को कुछ भी न अब खजर रहे, सींच ले अपने ज्ञान को कुछ भी न अब खजर रहे, खजर मतलब एक सूखा पेड़, कलाकारी जुनून को मौत सा लीन ले, कलाकारी जुनून को मौत सा लीन ले, बस उसकी अदाकारी रचनाएं अमर रहे, जिसमें विवेकी भंडार का जखीरा हो, जिसमें विवेकी भंडार का जखीरा हो, अमर कोश से शब्द तराशता वो हीरा, प्रारब्ध को कृष्ण मान, प्रारब्ध को कृष्ण मान, जो उसमें डूबती मीरा है, समझ की चाशनी में लिपटा वो किफायती शीरा है, लाख गमों के बावजूद, लाख गमों के बावजूद जहां बस मुस्कान की प्रचुरता है, जिसमें पांडित्य का दिखावा नहीं बस बोधि आत्मज्ञान की मधुरता है, जो गंभीर अंदरूनी इल्म को समझता है, जो गंभीर अंदरूनी इल्म को समझता है, जो चुभते निशानी जख्म से निखरता है, जो ख्वाबों में नहीं यथार्थ उड़ान भरता है, जो अपनों से दगा लेकर गिरकर फिर संभलता है, जो अपनों से दगा लेकर गिरकर फिर संभलता है, वो कोई शूरवीर नहीं मुंह चढ़ाती तस्वीर नहीं, वो कोई शूरवीर नहीं मुंह चढ़ाती तस्वीर नहीं, बस पैशन वाले कहलाता है। अब है कौन पैशन वाला? हर दौर में बदलता फैशन नहीं, हर दौर में बदलता फैशन नहीं, सीमित अवधि का सेशन नहीं, 5 सालों में आने वाला इलेक्शन नहीं, ताना मारता सजेशन नहीं, एक उम्र के बाद उम्र काटने को मिलती पेंशन नहीं, भ्रम को सच बताए ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं, भ्रम को सच बताए ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं, हर मौसम में बदले ऐसा अट्रैक्शन नहीं, यहाँ सबने सबको विश्वास से है जोड़ा, यहाँ सबने सबको विश्वास से है जोड़ा, यहाँ कोई अबंडन नहीं, समस्याओं में उलझ कर खो जाए ऐसा कोई पैशन। अब तक जाना ये परिवार किन चीजों का समायोजन है, और अब इस परिवार के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ी सी दुआएं। ये परिवार, इसमें मैंने कोशिश की है जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनके नाम में इसमें ऐड कर सकूं विद द मीनिंग। ये परिवार आदित्री सा चुलबुलाता रहे, हर दिशा में सम्मान पाता रहे, ये परिवार आदित्री सा चुलबुलाता रहे, हर दिशा में सम्मान पाता रहे, यहाँ खालिस उर्दू की नज्म छाई रहे, आशा है कि मधु सी मिठास समाई रहे, नामी ऊंचाइयों को छू शैलेंद्र बने, नामी ऊंचाइयों को छू शैलेंद्र बने, तमाम रस और अलंकार का ये केंद्र बने, टैलेंट की चांदनी से चमकता रहे, टैलेंट की चांदनी से चमकता रहे, ये कुटुंब पूर्णिमा सा दमकता रहे, उषा के तेज सा प्राचुर्य रहे, उषा के तेज सा प्राचुर्य रहे, सुरीले बोलों का माधुर्य बहे, देश में अपना घराना जमाता रहे, विदेश में अपना संस्कारी वंश बढ़ाता रहे, एक बक्से में अपने चिन्हों को संचित करे,
एक बक्से में अपने चिन्हों को संचित करे, फिर उसे तमाम नगमों से सुसज्जित करे। और हाँ, इस संदूक का रंग बस नीलू रखे, जो इसे दूर से भी देखे तो वो उसे नीतू लगे। राज राजेश्वर राजेश का ये रजवाड़ा, राज राजेश्वर राजेश का ये रजवाड़ा, उल्लासी तरंग का है ये आंगनबाड़ा, जो बाल प्रीत सा विमल लगे, जो बाल प्रीत सा विमल लगे, विमल मतलब शुद्ध, जहां ज्ञान वेदी श्रुति के इत्र का परिमल रिसे, ये रात के राकेश सा सदैव ही प्रसारित रहे, चारू के चंचल स्वरों पर आधारित रहे, ज्योति सा दमकता रेशमी परना ओढ़ा रहे, ज्योति सा दमकता रेशमी परना ओढ़ा रहे, बिन आशुतोष के कृतित्व के, बिन आशुतोष के कृतित्व के ये परिवार ओढ़ा लगे। लोपिता के गीतों से महमाता रहे, लोपिता के गीतों से महमाता रहे, नीता के वायलिन का जगराता रहे, ओम के प्रकाश सा ये अपना परचम गढ़ता रहे, ओम के प्रकाश सा ये अपना परचम गढ़ता रहे, हर दिन हर हफ्ते हर महीने और साल, हर दिन हर हफ्ते हर महीने और साल इस कबीले का आयुष्य बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। Excellent. Thank you, ma'am. मतलब actually she was supposed to join us on 3rd anniversary, which we had on Mother's Day 2023 last month only, but she was 14th not of well May. that day. She wasn't well that day. She and her daughter both were not well. So उसके लिए she had prepared this one. After that she is joining for the first time. तो ये तो बहुत ही मतलब आपने पूरा परिवार को आपने एक मोतियों में पिरो दिया. It was such an amazing पूरा thing. परिवार एक माला बन गया है। पूरा मतलब परिवार एक माला बन गया है। हर मोती की अपनी एक क्वालिटी है, और जब ये क्वालिटी पूरी एक माला में पिर जाती है तो एक सच में ये परिवार मेरे लिए तो मेरे लिए शब्द नहीं है, परिवार मेरे लिए क्या बन गया है। so nice Parna. मुझे तो जो पहला वाला भी था पैशन वाले के बारे में जो उसने बोला था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आयुषी का मैं हमेशा ही बोलती हूँ चॉइस ऑफ वर्ड्स जिस तरीके से वो लिखती हैं, इट्स नॉट completely very easy, but it helps someone like me। मैं उसकी कविता सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मतलब मानसिक विकास भी हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि आई अंडरस्टैंड हाउ शी मतलब जिस तरीके से वो वर्ड्स एसोसिएट करके लिखती है, इट्स अ वेरी आई वुड से इट्स एन एक्सपर्टीज, नॉट जस्ट अ स्किल। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ही अच्छा था, उसका तो मैं क्या ही कहूँ। आई एम श्योर एवरीवन अमंगस्ट अस फेल्ट इट कि बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है वो, और सबका नाम जिस तरीके से मतलब सोच के एफर्ट लगा के हर किसी का एकदम रेलेवेंट तरीके से उसको लिख के, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मतलब 4 मिनट के लिए क्या आई लड़की, लेकिन आप तो बिल्कुल पूरी तरह से लगा के साथ। थैंक यू सो मच मैम। उषा मैम। Ayushi, it was so touching the way you have made streamlined each one's name, and you made a like Moti ka har right now. It is really priceless, invaluable for us. I have no words to say. It was very nice. So creative you are, and always listening to your poem, the way you are narrating your poem, even that is a great experience for me. Thank you so much, ma'am. You are looking very nice today. Thank you, Ayushi. Thank you, Ayushi. Bindi suits you. Actually, she has got a daughter by the name Aditri Sharma. उसकी आप देखेंगे लेटेस्ट कई रील्स आपको मिलेंगी इंस्टा पे हमारे। अच्छा। पहले तो शी एंटर्ड एज ए गेट क्रैशर। एक दिन आई, उसने कुछ सुनाना शुरू किया, इसने रोका आयुषी ने, बट शी नरेटेड हर पोएट्री मजे से। वो मैंने रील में डाला हुआ है। आई हैव रिटन दैट वेरी एडोरेबल गेट क्रैशर। और उसके बाद शी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। उसके बाद तो देखो वो नानी का उन्होंने जो सुनाया था पीछे, वो कौन सा, नानी की नाव, नानी की नाव चली, नानी की नाव चली। अमेजिंग बहुत ही, शी इज वेरी स्वीट, वेरी स्मार्ट। आज नहीं आई मदर्स डे सर, उसने मदर्स डे के लिए भी प्रिपेयर किया था, बट हम दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पाए उस दिन। आज मैं सोच रहा था शायद ज्वाइन करेगी, बट एनीवेज मैं एक बार पूछती हूँ सर, 1 मिनट पूछती हूँ, अगर टाइम है सर अभी। नहीं कोई बात नहीं, आप जस्ट बुला लो, हाय तो कर देंगे, उसके साथ हाय हेलो कर देंगे, बुला लो। तो मलिका, यू आर गोइंग टू परफॉर्म विद योर डॉटर? My daughter is busy with her friend. Okay. So we'll have a solo performance from you then.
I have nothing to perform. All I can say is that I am in complete awe of this whole thing that happened today. I can't thank enough each and every individual who participated, who stuck through till the end. And it's been really inspiring. And I'm really looking forward to this whole gathering, happening with more patients, like, some other patients. And I'm so happy that, at least the 4 people that decided to join us today, I'm really thankful to you guys, especially, I mean, Mr. Ramesh, Prem, Akanksha and Suchishmita, and everyone else who performed with so much zest, Jayanti ma'am. So I quickly want to introduce Jayanti ma'am to my husband. Yeah, sure. So my husband, he's the CEO of 4baseCare. Just you can take it forward. So Jayanti ma'am. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, so I keep talking about So I keep talking about you to him, that, it's incredible how she has built this amazing community, and it's not easy to do, because we are trying to do it now, and it is not an easy job at all. So kudos to Nobody you. wants to really talk about cancer when there is song and dance and So in fact, I had one suggestion, Dr. Mongia. Maybe what we can do next time is, if it is possible, because this is a great platform. As in, I have not seen this kind of an online engagement or event happening with so much of enthusiasm. So what we can do is, maybe we can, all the participants who are going to perform, they can be there on Zoom, and we can invite others to join and listen to it live. Right? We don't have to moderate them also, but say giving a link to someone to join and in live experience this event, this whole gathering. We can do that. We can do that. Would be great. What we can do is we can request them to keep themselves muted as well as off camera. No, we don't even have to do that. So what we can do in Zoom, that all the participants, we can have it as the organizers, and then everyone else can just join. You will not be able to see them also. They cannot do any activity. We can do that. Next time we can do that. We'll plan. Surely. So thank you. Thank you so much. Ayushi, is she there? Or has she gone? नहीं, अगर मूड नहीं है तो मत, she has don't force gone. her. वो आई थी. No, अच्छा, I'm not force मत forcing her. करो उसको, force मत करो. वो बस आई थोड़ी देर के लिए, मेरा मन नहीं है आज, वो चली गई. एक्चुअली वो थक गई आज दिन भर. यहाँ पे मार्बल रॉक वगैरह हैं, तो वहां पे गए थे हम. I know. वो थक गई है. मेरे ख्याल से I'll tell Malika, जो अदिति है ना, she is so spontaneous, मतलब उसका मन नहीं है ना, तो वो चली गई. एक बार एक आनंद बख्शी जी हैं, जो म्यूजिक, जो आपके लिरिसिस्ट हैं, now he is no more. उनके बेटे आए थे, राकेश आनंद बख्शी, मिस्टर राकेश आनंद बख्शी. ही इज ऑल्सो एन ऑथर. उनके आनंद बख्शी जी की बायोग्राफी लिखी है उन्होंने. तो उन्होंने आके उनके आयुषी से पूछा, मतलब 2-3 सवाल किए कि वो कुछ सुना दे. उसने नहीं सुनाया. मतलब उसने कहा कि पोएट्री, मेरे को बहुत कुछ याद है, अब सिर्फ एक ही याद आ रहा है जो मैं सुनाना नहीं चाहती. फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने मूवी कौन सी देखी? We don't watch movies. कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं. So they don't watch movies. How old is she? How old is she? 6 years old. 6 years old. 6 years old. तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, one more thing he asked, last में क्या पूछा था उन्होंने? गाना. हाँ, गाना कौन सा सुना आपने YouTube के ऊपर या मूवी में? कोई गाना सुना आपने? कहती, जब मैं गाना सुनती हूँ ना, मेरे को नींद आ जाती, मैं गाना नहीं सुनती. She didn't say, कुछ भी नहीं सुनाया उन्होंने. Same, 7 years old, so I can understand the same. And from next event onward, she has been participating, she has been performing. कुछ ना कुछ props लेके आ जाएगी, कुछ ना कुछ सुनाती रहेगी, डांस करती रहेगी. So you must see, काफी रील्स हैं उसकी, मतलब at least 4 I can remember. 4 एक रील्स बनाई है उसके हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर. You can see आदित्य की. बहुत ही अडोरेबल है वो. उसकी आयुषी जो पर्सनल रील्स भी शेयर करती है, मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ. Thank you, ma'am. चलिए, thank you very much. I'll thank, first of all, I'll thank Ramesh ji. Ramesh ji, thank you so much for sitting for the entire event. Let me tell all of you, he was the first one to join. When I logged in at 5:45, he was the first one to log in. And he has been sitting for the entire 3 hours now. And I requested him कि if you were not comfortable, आप आधे घंटे 1 घंटे बाद you can put off your camera, you can lay down and you can जैसा भी आपको comfortable हो. But he has been sitting. इन्होंने गाना सुना, experience share किए. He enjoyed, thoroughly enjoyed. Now one thing is,
I've seen generally what people do. कुछ लोग आते हैं मतलब they are busy on their mobiles and all that. But I saw for the entire 3 hours he was enjoying each and every moment. This is what Jayanti taught us last time. So live in the moment. So this is what I can say about Mr. Ramesh. So thank you so much, Ramesh ji, for inspiring us today. Thank you, thank you. I love music. I enjoy music always, and it relaxes me so much. Thank you so much. And next, I'll thank Prem ji. Prem ji ne starting में actually some of you were not there, so he shared his journey. He was not going to perform today, but इन्होंने अपनी journey share करी. And एक साल से he is undergoing treatment. So presently, you are based in Bangalore, na sir, Prem ji? You can unmute yourself. Yes, sir. I am based at Bangalore, sir. हाँ, वैसे यूपी से हैं ये, आगरा के पास से हैं, एटा से, और इन्होंने he was a medical representative. Yeah, I am from medical oncology department only. I am from medical representative, taking care as a South India as a in charge, regional sales manager. Yes. So he was with Cipla, और इन्होंने आज earlier, I started with Cipla first. Then my last company was Samarth Oncology. Okay. It is a Bombay-based company actually. So Prem ji, it was really a pleasure meeting you. आप future के अंदर भी आपसे मुलाकात होगी. Just tell me one thing. Did you enjoy the session or not? Yes, I enjoyed, sir. I enjoyed, sir. All the singings, all the poetries, everything. So yes, nice. sir. I enjoyed, Thank you. Sir. So this was our main aim. This was our main aim to entertain you, all of you. Sir, sir, I want Akanksha to end the session. Yeah, definitely. I was coming to her only. I was coming to Akanksha only. So Akanksha, आपको मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ आप. बहुत अच्छा लगा. मैं सर पहले ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब ट्रायल बस गाना सुना, कि अब तो ज्वाइन करना है, तो मैं सिर्फ गाने सुनने के लिए यहाँ पे आई थी, और मिलना तो नहीं था किसी कौन क्या है. नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. शी इज वेरी स्वीट. और मेरा तो पुराना शहर है झांसी में मैंने 3 साल सर्व किया है, कैंटोनमेंट. आई वाज इन कैंटोनमेंट. तो ये झांसी की हैं, तो और भी अच्छा कनेक्शन हो गया हमारा. सो थैंक यू आकांक्षा, इट वाज लवली मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. और थैंक यू जयंती. अब मैं देखो पढ़ना आपको लेकर नहीं आती है. बड़ी मुश्किल से लेकर आई है आज हमारे पास जयंती को. I understand. She will come and she has to. Yeah, and also almost as all patients here will know कि हम लोग in a बहुत limited energy होती है. I understand. उस limited energy हम बहुत कुछ हम सब करने वाली है. But in spite of that, you have sat for almost 2.5 hours. Yes. अरे वाह, 6:30 से लेकर. So nice. So much better. So I was like, आज मैं और मुझे आपका गाना सुनना था. मैंने लास्ट टाइम भी आपका गाना मिस कर दिया. अच्छा, तो फिर कैसा लगा, कैसा आपने बताया? बहुत बढ़िया सर. एंड पढ़ना आपकी काफी तारीफ करती है आपके गाने की. And I know all of that is right and worthy and absolutely on point. So nice जयंती. हम लोग आपको आपके घर पे आके सुनाएंगे गाना. आपके कान में सुना कर जाएंगे. Definitely. Actually, you know, last time we had a event with a old age home. अभी Saturday को हमने किया था. तो we were talking कि अब next event जो हम करेंगे वो जयंती के घर पे जाके करेंगे. तो अभी तो हम जा रहे हैं वेकेशन पे घूमने जा रहे हैं. Actually, in fact, I am going to Bangalore. Bangalore से we are moving to Ooty and other places. तो अभी next week we are going to Bangalore. तो सारे Bangalore वाले बैठे हैं in fact. मिलते बैंगलोर में. बैंगलोर में मिलते हैं. Definitely. अभी तो we'll straight away move to Ooty and other places. Then we'll be coming back on 24th to Bangalore, and then we have to stay there for some reasons. I'll have to stay over there for at least a week or so. So definitely we'll catch up. Definitely. Deepika and Deepika patiently they sat through the whole thing. They didn't say anything much. Anything, you guys, I really appreciate that, you know, you sat through the whole session and it ran quite long. Say something if you want, please. Hi ma'am. I enjoyed myself. So glad. I'm very much, you know, like impressed by all of the singers here. They sounded as if, you know, like they were the professional singers, and yes. It was superb, awesome.
Thank you so much. Okay, Deepika. Deepika. Hi. It is very nice, ma'am. Very beautiful. First time. This is first time for me. Thank you It so much was for joining us, very Deepika. Thank you, both of you. Thank you so much. Thank you so much. So thank you very much, everyone. I think, Malika, let me tell you, I'm really grateful to you. You have given us this opportunity. Like from Passionwale side, I can say that you gave us this opportunity to be. It's an opportunity for us to be associated with you as well, because this is such a novel idea. Yeah. That's great. But if we are able to entertain kuch smiles, if we have brought some smiles on the faces of Ramesh ji, Akansha, Suchi, Smita, and Prem, so I think that made our day. Thank you so much. Mine too. Thank you so much. I think before wind up, I'll request Parna to say the last words for today's session. Me, so while this was not entirely personal, but as when every cancer patient was going through their journey, I was always, it was very difficult for me to not identify with what happened to Jayanti. And especially the young kids, I mean, Akansha and Suchasmita, I mean, I was devastated every time. I still don't know. I mean, I know we all have our coping mechanisms. कभी हम सोचते हैं कि हम ये बर्डन बेयर कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को ये हुआ है. कभी हम सोचते हैं कि जो भी हुआ है फेस करना है. बट मेरे पास ऑनेस्टली दिल से मेरे को कभी नहीं पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों के साथ, और ऐसा ये वाली जो बीमारी है. बट आई गेस the thing that I'm taking away again today is that we don't realize how alive we are unless we are actually facing a death-like situation. वरना हम लोग रोज दिन ब दिन जीते, हम लोगों को हिट नहीं करता, स्ट्राइक नहीं करता. We take our living for granted. It's only something like cancer when it comes in our lives is when हम लोगों को एहसास होता है कि भाई हम जिंदा थे और अभी वो थोड़ा डामाडोल है वो चीज. So that is something which I think brings a certain amount of resilience in almost every cancer patient I have seen. I'm a caregiver for Jayanti, so I see it pretty closely. So that, and the other thing is, I think एक चीज मैं डॉक्टर राजेश का कहना चाहूंगी कि he never misses an opportunity. कभी भी एक भी opportunity वो miss नहीं करते कि अगर उनको लगता है कि कोई भी पैशन वाले में आके थोड़ा अपने अंदर ऑक्सीजन भर सकते हैं तो उनको ये मौका दिया जाए, वो एक भी मौका नहीं छोड़ते. जब भी उनको लगता है, चाहे वो किसी ओल्ड एज होम में हो, चाहे वो somebody who is going through this journey, या फिर कोई cancer motivation speaker like Jayanti, he will always ensure कि come be a part of our group. Let us share our happiness with you. Let us do something entertaining together. Let us forget whatever stress we have for these many hours जिसमें हम लोग हैं. And let's just appreciate each other's kindness, compassion, honesty, talent, you name it. So a special thanks for Dr. Rajesh as well. मुझे पता है मैं बहुत बारी attend नहीं कर सकती हूँ. I'm also not very regular in this. कई बारी बहुत सारे दूसरी चीजें बीच में आ जाते हैं. But I try and make sure I attend as much as I can. क्योंकि मैं हमेशा ही इस वाले ऐसे मीटिंग से हमेशा ही मैं कुछ लेके जाती हूँ, कुछ लेके भी जाती हूँ obviously, and every time I take something away which is precious for me. So today was no different, and I loved meeting all of you, Malika, and I loved meeting all the girls and Mr. Ramesh also. It was really I would say a privilege to meet all of you, and I hope this continues. That's all I would say. It will. I'm sure. Thank you, Parna. Thank you for such kind words, sweet words. Maybe Nivedita can say a few words. Yeah. Actually, yes. I mean, Passion Wale group is something जो मुझे राजेश जी ने बोला था that I am a very, I mean, I joined Passion Wale group this year. Rajesh ji approached me, and I mean, he said that it was during the COVID times that this group started, and I'm so thankful, that this group has started. And it's not only about coming together, singing, enjoying, entertaining each other. It's not only that, but it's also, taking out some time in a month or in a week and
just spending time with a closed group where, you know, age is no bar, talent is no bar, nothing, distance is no bar. I mean, I personally, Rajesh ji to mujhe pura stalk karte hain ki tum join karo, and because I am traveling a lot, you know, from last couple of months, I keep on saying him sorry. In fact, today also I had to go to and fro hospital mein kuch kaam tha. So I just said, first I said कि मैं पहले join करूँगी, then I said कि मैंने कहा बाद में join करूँगी, then जब इन्होंने कहा कि हम wait कर रहे हैं, I said अभी मैं hospital में मैं बाद में join करूँगी. So but yes, everything cut short. I really appreciate this group, and you know, whether it is for a noble cause or whether it is just for, you know, just coming together and just spreading smile. I think that simple thing, coming together and spreading smile, is the most important thing. So I am really thankful that now I am a part of this family, and I would love to continue being part of this family, and I want that I pray that this family grows not only in India but globally also. I mean, right now also we have 1 or 2 people from outside India, as far as I know, but yes, I want this. So actually, it's interesting that you mentioned that, and I want to wind up as fast as I can because I know it's been a long time. So we have 4baseCare is there in Bangladesh and Nepal, Philippines. So we have patients across the globe. In fact, we are thinking of bringing them on board so that they get experience of something like this. Yes. I don't think any of them get this 3 hours of their life, just experiencing this, being with others, just forgetting about everything for a couple of hours. So I think, yeah, there's a lot of scope to collaborate and impact people's life. And now that you know that we have 4 people from 4baseCare who have participated in this, once this goes public, once this starts, you know, getting a little bit of exposure, I think, and I'm sure there would be other patients as well who would want to join, who would want to be a part of something like this. So let's hope that, you know, the next steps would be a global event where we'll have patients from those countries as well join. Yeah, that's the hope. So nice. Thank you. Thank you, Malika. And Yeah. thank you for giving this opportunity to us. Thank you, Doctor. Thank you so much. Thank you. So good night, everyone. Wonderful. See you next Thank time. you all. Good See you night. soon. Bye. Bye. Good night, everyone. Take Thank you. care. Bye. Bye. Bye, guys. Bye.